Check. Mic test 1 2. What is up, everyone? क्या हाल है? Today we'll get deeper. We'll go deeper into why men are fucked in India. Fake cases पे 10 साल की जेल. So maybe there's something is horrible going on. Last time जब मैंने देखा था मेरा point ये था कि it's not that horrible. To summarize my point of the last time, जल्दी से, if you give me a minute. क्योंकि जो लास्ट की भी स्ट्रीम थी ना उसमें आई नीड टू डू दिस, आई नीड टू स्टिक टू अ टॉपिक. व्हाट्सअप अनंत, क्या हाल है? गुड ब्रो. अच्छा तूने पहले जवाब दे दिया. हाँ, तो आई नीड टू डू दिस व्हेन आई एम मेकिंग अ पॉइंट, व्हेन आई एम मेकिंग अ complicated point. I need to continue to make the point despite of some of the chats, और उसके बाद I need to catch up on the chat again. क्योंकि होता क्या, मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ पॉइंट, उसके बाद I also try to engage with the chat at the same time and the point gets lost somewhere in the middle. So जो लास्ट पॉइंट था वो था अबाउट कंसेंट, राइट? जो लास्ट वाली वीडियो देखी थी हमने श्वेता वाली, उसमें बेसिक पॉइंट ये था कि इफ़ समवन, अगर तुम पे कोई लड़की चार्ज लगाती है बाद में आफ्टर द रिलेशनशिप दैट यू हैड सेक्स विद हर विद द प्रीटेंस ऑफ मैरिज एंड तुम शादी नहीं करते, तो यू कैन बी चार्ज फॉर रेप. एंड दैट वाज श्वेता आपका पॉइंट था कि दिस इज क्लियरली एंटी मेन. आई थॉट इट इज़ नॉट क्लियरली एंटी मेन if it is done, if the sex is done only because of the pretense of marriage, so it can be considered manipulation. So it's not only, it doesn't have to be anti-men. क्या हाल है अमित? cheers guys. आज मुझे पीने से मत रोको, हमेशा हमें आरक्षण मिल गया, जश्न तो बनता है. अरे मुबारक हो. चलो, I'm glad you got what you were looking for. That's a personal stance. That's not a political stance. I don't know anything about this, but I'm glad that you got what you were looking for. चलो, मुबारक हो. Also, फिर हाँ, it's time for you to quit alcoholism as well, right? तो जो last video का point था वो ये था कि we were talking about consent. So let's say this is consent, right? Consent, ठीक है. तो ये जो consent है, अगर तुमने कोई एक चीज़ को consent करा है तो वो चीज़ वैलिड, ये consent की वैलिडिटी तब होती है जब कंसेंट देने से पहले तुम केपेबल हो उस कंसेंट को देने के, राइट? कंसेंट की वैलिडिटी तब होती है. पीसी स्पेक्स हैं, अभी बताता हूँ 2 मिनट में. कंसेंट इज ओनली वैलिड व्हेन यू आर केपेबल ऑफ कंसेंटिंग. व्हाट डिटरमाइंस दैट यू आर केपेबल ऑफ कंसेंटिंग? फर्स्ट इज द लीगल एज, ऑफ कोर्स, राइट? और तुम किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में नहीं हो, जैसे अल्कोहल वगैरह, इन सब चीज़ों के इन्फ्लुएंस में नहीं हो तुम ज़्यादा. इस केस में कि व्हेन यू आर डूइंग इन द प्रीटेंस ऑफ मैरिज, तो जो एक पार्टी है जो कंसेंट दे रही है उसको तो पता है, अगर वो मैनिपुलेट कर रहा है कि हम शादी कर लेंगे, तो उसको तो पता है कि मैं शादी नहीं करूँगा, राइट? लेकिन जो दूसरी पार्टी है उसको नहीं पता कि इसका प्लान है शादी नहीं करने का. नो, व्हाटएवर यू थिंक अबाउट इट पर्सनली, दैट मेक्स द कंसेंट ऑफ द सेकेंड पार्टी इनवैलिड, बिकॉज द सेकेंड पार्टी इज़ नॉट केपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, क्योंकि सेकेंड पार्टी को सारे चीज़ें नहीं पता है उसके अराउंड, उस चीज़ के अराउंड जो भी चीज़ के ऊपर तुम कंसेंट दे रहे हो. सो दैट्स व्हाई इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस टू मी. लेट्स सी व्हाट श्वेता भाई. पीसी स्पेक्स यार, राइजन का 3800X, GTX 1080 Ti वाला नहीं, नॉर्मल मदरबोर्ड, आई थिंक आई फॉरगेट 32 gigs ऑफ रैम, एंड या दैट्स बेसिकली अबाउट इट. कुछ मेजरमेंट्स तो नहीं करा ना? नहीं. So yeah, let's see what this is about. कैसी हो बहन, काम करो नहीं करो, कितना फाड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिंदगी में फाड़ते रहो, स्पेशली इस टाइम में जहाँ पे तुम्हारी फाड़ने की चांसेस तेरी ज़्यादा हैं. लेफ्ट राइट कुछ भी हो, तुम्हारी फट के हाथ में आ सकती है, चुरा हो सकता है. 10 साल क्या 7 साल क्या पता नहीं कितने साल की जेल हो जाए तुमको भाई. तो उस पर तो बहुत गहराई में बात करेंगे. पहले बताओ कितना टास्क छोड़ा, कितना अपने पे काम कर रहे हो, कितना अपने आप को समझदार बना रहे हो, कितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो. अटैक मोड, पावरफुल टेम्पलेट में कितने टास्क छोड़े, नीचे लिखे. न्यू टेम्पलेट अगर यूज कर रहे हो तो क्या तुम्हारा कितने टास्क छोड़े, लिखो. नीचे रजिस्टर करो भाई, कितना फाड़ रहे हो, चीजें यूज कर रहे हो. ऑब्वियसली वो तुम्हारे काम तो करवाएंगी इसलिए बनाई गई हैं. लिखो. सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि एकदम नया ताजा कानून आया है. नया ताजा कानून जिसमें कि अगर आप किसी लड़की के साथ अफेयर करते हो, लव अफेयर करते हो और शादी नहीं कर रहे, तो आपको वो लड़की 10 साल तक के लिए जेल भेज सकती है. इस सिंपल जो सेंटेंस है ये, अगर आप किसी लड़की के साथ अफेयर करते हो, लव अफेयर करते हो. This is a completely different sentence, by the way. I need to say this.
पहले जो पिछली वीडियो थी उसमें बात की हुई थी कि अगर तुम किसी के साथ सेक्स करते हो विद द प्रीटेंस ऑफ मैरिज, मतलब तुम सेक्स कर रहे हो ये कह के कि हम शादी तो कर ही लेंगे ना, हम शादी तो करेंगे. सो द ओनली इफ अ लेडी कैन प्रूव द ओनली रीजन शी हैड सेक्स विद यू वाज बिकॉज यू मेड हर बिलीव दैट यू वर गोना मैरी हर एंड देन यू डिडंट मैरी हर, दैट्स मैनिपुलेशन, that can be considered rape. This is a completely different sentence. I don't even think that is that true. कि अगर तुम किसी से रिलेशनशिप में और तुम शादी नहीं कर रहे तो तुम्हें सजा हो जाएगी. करते हो, अगर आपसे शादी नहीं करते हो तो आपको 10 साल तक जेल भेज सकती है. किसी भी नॉर्मल What the fuck is that? I don't believe that almost. I almost don't believe that. यूनिवर्स में does that sentence make any sense? For whichever reasons मेरा ब्रेकअप हो गया, for whichever reasons I found out something, मेरे को Oh, hello. विवेक जी, क्या हाल है तुम्हारे? compatibility नहीं बैठी. भाई ये तो कुछ अलग ही है. देख ये तो कुछ अलग ही है. I don't know if you saw this or not. But dude, this is a completely different sentence. This is completely different. एकदम नया ताज़ा कानून आया है नया ताज़ा कानून जिसमें कि अगर आप किसी लड़की के साथ अफेयर करते हो, लव अफेयर करते हो और शादी नहीं कर रहे तो आपको वो लड़की 10 साल तक के लिए जेल भेज सकती है. इससे What the fuck? That doesn't make any sense at all. जो सेंटेंस था ये, अगर आप किसी लड़की के साथ अफेयर करते हो, लव अफेयर करते हो, अगर आपसे शादी नहीं करते हो तो आपको 10 साल तक जेल भेज सकती है. किसी भी नॉर्मल यूनिवर्स में does that sentence make any sense? For whichever reasons मेरा ब्रेकअप हो गया, for whichever reasons I found out something, मेरे को compatibility नहीं बैठी. हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं, हमारे ambitions completely different है. इंसान ही हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स completely different हो, जैसे वो जिंदगी जीती है वो इंसान हो सकता है आलसी, हो सकता है उसका सोने का. ये लेटेस्ट न्यूज़ है. पता नहीं यार, मतलब आई वुड रिक्वायर मोर डिटेल्स कि भाई कौन सा लॉ है, कौन सा एक्ट है, क्या है. सो एटलीस्ट वी कैन रीड अबाउट इट, एटलीस्ट वी कैन सर्च अबाउट इट. वी विल डू दैट आफ्टर दिस वीडियो. देयर हैज़ टू बी सम न्यूआंस इन इट, अदरवाइज तुम तो यार कुछ डेट कर ही नहीं सकते किसी को. There has to be some nuance in it. टाइम ऐसा वैसा हो जिस वजह से हमारी भसड़ होती है, हम क्लियरली देख रहे हैं हमारी लाइफ जहां पे जाएगी वो चीजें कभी कॉन्ग्रुएंटली बढ़ नहीं सकती, पैरेलल नहीं बढ़ सकती दूसरे से. बच्चों को कैसे चाइल्ड रेयरिंग का मेथोडोलॉजी है, जैसे मैं सोचता हूं पेरेंटिंग टेक्निक कैसी होती है, वो शायद डिफरेंट हो. उस इंसान की जैसे पेरेंटिंग जैसे वो बातें कर रही है, जैसे वर्णन कर रही है, पेरेंटिंग करना चाहिए, उसका कभी डिफरेंट हो. 50 डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसके बेसिस पे हो सकता है दो लोग कहें कि हां यार मेरे को शायद इस रिलेशनशिप में मेरे को कंपैटिबिलिटी नहीं दिख रही. कंपैटिबिलिटी नाम बहुत ट्रू. ये लव अफेयर की बात थोड़ी है, ये तो काफ़ी गुमराह कर रहा है लॉयर. मे बी कुछ अलग बात है भाई जो हमको नहीं पता, मे बी कुछ अलग ही बात है जो हमको नहीं पता. राइट नाउ दिस साउंड्स फेक. आई एम गोना बी ऑनेस्ट, मुझे ये चीज़ असली नहीं लग रही सुन के. इफ इट इज़ ट्रू, जस्ट दैट स्टेटमेंट इन इटसेल्फ कि अगर तुम किसी के साथ डेट कर रहे हो या लव अफेयर कर रहे हो और शादी नहीं कर रहे तो शी कैन सेंड यू इन जेल. डूड, आई होप दैट्स नॉट फकिंग ट्रू. बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तब रिकॉग्नाइज करेंगे ये. और उसके बेसिस पे लेट्स से अगर आप रिलेशनशिप एंड कर रहे हो तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? 10 साल जेल. ब्रेकअप करने के लिए 10 साल जेल. यार श्वेता, नाइस. Does he try to be funny? इस तरीके or is he just extremely emotional and it comes off as a little funny? I don't know. क्या हो रहा है भाई, ये तो कैसे नॉर्मल है भाई ये? भाई मास प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहे इस स्टेटमेंट पे? एक सेंटेंस है दैट इज सिनोनिमस टू ऑपरेशन. अरे we don't even know if that's true yet. अभी तक कुछ पता ही क्या लगा. I'm assuming now, I'm also now being extremely emotional like Shwetab. I'm assuming कि श्वेताब भी ये वीडियो पहली बार देख रहा है. Why would you just assume it to be true? Just because वो लॉयर कह रहा है? Why would you assume it to be true? लिनियरली ऑपरेशन है ये तो. और कमाल की बात ये है By the way, Google Oye Indori rape case. Oye Indori is a popular YouTuber who got accused of rape because of refused to marry. हाँ चल वो देखते हैं यार, भी देखते हैं. कि अगर वो लड़की आपके साथ ऐसा करती है और शादी नहीं करती फिर आपके साथ, तो आप कुछ नहीं कर सकते. देखिए इसका सीधा सीधा सोल्यूशन ये है कि जब भी आप ऐसे अफेयर में हो तो आप एक प्रूफ बना के रखें कि आपने शादी का वादा किया ही नहीं. इससे आप बच जाएंगे. Dude, oh come on. I'm gonna blame Shweta for this. I'm totally gonna blame Shweta for this. ये वीडियो एडिट श्वेता आपने करी है. There's a chance कि इस लॉयर ने पहले भी बोली थी बात and he just edited it out. Dude, that's fear mongering. तुम फाड़ रहे हो लोगों की बेफालतू में. या तो इस लॉयर ने बहुत ही गलत तरीके से बोली है अपनी स्टेटमेंट. ही इज अ लॉयर, ही शुडंट बी डूइंग दैट. या फिर श्वेताब ने एडिट ऐसे करी है टू स्प्रेड टू फियर मॉन्गर. फियर मॉन्गर ही होता है ना, क्या होता है? This is edited or spoken horribly. ये सोल्यूशन नहीं है. ये वाली बात होगी हम कागज में सोल्यूशन निकाल के तुम्हें दे रहे हैं. सोल्यूशन एक्चुअल में है कि इसके पीछे सब जितने लोग यूनाइट कर सकते हैं, जितने लोग भी पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जितने लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जितना भी लोग आवाज उठा सकते हैं, आवाज उठा के इसको बदलने के लिए अपील करनी पड़ेगी, इसको बदलने की. भाई मोस्ट सब है समझदार लोग रिलेशनशिप में एंटर करते हैं ये सोच के, ये प्री असम्पशन होता है कि भाई दिस थिंग विल वर्क. मोस्ट लोग ये सोचते हैं, आइडिया इन देयर माइंड इज कि यार दिस विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ लॉन्ग टर्म कंपेनियनशिप. मोस्टली लोग ऐसे रिलेशनशिप में जाते हैं साथी के लिए. लेट्स से आप रिलेशनशिप में आ गए हो, आपको इंसान पसंद है और आप मन में कह रहे हो कि हां भाई मैं इससे शादी करना चाहता हूं, लेकिन आप मुंह से नहीं बोल सकते. और लड़की कह रही है तुम शादी करोगे. मतलब ये प्रैक्टिकलिटी में दिन बर दिन सेकंड बाय सेकंड की रियलिटी में प्रैक्टिकल नहीं है. अगेन उस लॉयर ने क्या बोला था आई डोंट फकिंग नो, बट जो एक्चुअल
बात हुई थी एटलीस्ट लास्ट वीडियो में वाज बेसिकली दैट कि अगर तुम किसी के साथ सेक्स करते हो विद द प्रीटेंस ऑफ मैरिज, यानी कि अगर तुम सेक्स करते हो इस बेस पे ये, एंड दिस इज द रीजन, इफ द गर्ल कैन प्रूव कि शी ओनली हैड सेक्स विद यू बिकॉज ऑफ दिस, देन यू कैन गो टू जेल फॉर ऑल ऑफ दिस। पलक व्हाट्सअप क्या हाल है? नाउ दिस इज एडिटेड हॉरिबली और स्पोकन हॉरिबली, आई डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। लोग रिलेशनशिप में रहे हैं अपनी लाइफ में, तुम बताओ, तुमने बात करी, लोग बच्चों के नाम रख देते हैं भाई विद इन 3 months। शादी तो दूर की बात हुई और वो ब्रेकअप भी होता है 6 महीने में। हाँ, तो शादी की बात करना इज नॉट द इशू, यू कैन टॉक अबाउट मैरिज विद योर पार्टनर और व्हाटएवर, बट इट्स नॉट लाइक कि तुमने ऐसे बोल दिया कि हाँ हम शादी कर लेंगे, देन ऑल ऑफ अ सडन द नेक्स्ट थिंग यू नो यू आर इन जेल बिकॉज ऑफ द ब्रेकअप। नो, 18 साल के बच्चे जो होते हैं भाई रिलेशनशिप में, मतलब ये दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ। हो सकता है आई एम कंप्लीटली रॉन्ग एंड श्वेता एंड दैट गाय आर कंप्लीटली राइट and Vivek as well. हो सकता है, that's totally possible, but that's what we are here for today. We need to do more research. 19 साल के बच्चे जो है रिलेशनशिप में, वो अपने बच्चों के नाम पर रख लेते हैं, चिंटू पिंटू का, पिंटू को क्या करोगे, ये वो। अबे बकवास इंसान क्या क्या बकवास करता है, मेरा पॉइंट ये है। इमेजिन करो किसी भी कन्वर्सेशन में हम एंटरटेन नहीं कर सकते कि सुनो यार 10 साल बाद हम लोग ये करेंगे, 5 साल बाद हम ये करेंगे। ये कन्वर्सेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती अगर तुम ये कह रहे हो कि भाई मैं ये एंटरटेन नहीं कर सकता, उसके साथ शादी करूंगा। एनी कन्वर्सेशन पार्टनर के साथ कर रहा हूं जो मेरी गर्लफ्रेंड, That's not what that maybe I'm reading it completely wrong. Maybe I'm reading it completely wrong. And also Shwetab just is talking like कि भाई किसी उसको कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। That's not how it works. Well, not usually. जिसको मैं प्यार करता हूं, मैं सोचो लीगल पे सोच गलती से भी अगर वो मुझसे बात करिए तो सुनो जब भाई शादी हो जाएगी तो हम लोग क्या उधर वेकेशन में आएंगे, तो मैं इसको मैं अप्रूव कर सकता हूं ना डिनाई कर सकता हूं। प्रैक्टिकलिटी में अप्लाई नहीं कर सकता, तुम कभी जिंदगी बात नहीं कर सकता घर कैसा खरीदेंगे, जो कि 500। And partly this video is in the entertainment genre. Partly you have to admit that. Also, anyone can accuse anyone of rape, but at the end of the day, they have to prove it in court. No, of course. That's the point of the courts. That's the point. उस दिन जो हम लोग मिस, I did a horrible job at stating my case जब हम उस दिन बात कर रहे थे उस दिन। खैर अभी भी कोई ऐसा बहुत वो नहीं है। तो अगेन वी वर टॉकिंग अबाउट कंसेंट। कंसेंट इज वैलिड बेस्ड ऑन दीज थिंग्स कि पहले तो इंसान केपेबल होना चाहिए कंसेंट देने के लिए। उस केपेबल होने के लिए पहले तो लीगल एज का इंसान होना चाहिए। ऑल्सो उसके अंदर द पर्सन शुडेंट बी अंडर एनी सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस, अल्कोहल वगैरह ये सारी चीज़ें। तो द कंसेंट इज वैलिड। उसके बाद जो दोनों पार्टीज़ हैं, अज्यूमिंग ये चीज़ सिर्फ 2 लोगों को इफेक्ट करती है, जो दोनों पार्टीज़ हैं उन दोनों को पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट द थिंग दे आर कंसेंटिंग टू। तो वंस अगेन फॉर एग्जाम्पल ये जो फर्स्ट वाला पर्सन है, इसको पता है कि मैं अभी तो कह रहा हूँ शादी, लेकिन बाद में मैं नहीं करूँगा। लेकिन जो सेकंड पर्सन है जिसने कंसेंट दिया है, द फीमेल इन दिस केस लेट्स से, उसको नहीं पता कि ये बाद में इसका करने का प्लान नहीं है, देन द कंसेंट इज़ नॉट वैलिड। सो एंड यू नो अनकंसेंचुअल सेक्स वुड बी यू नो सेट वुड बी रेप, राइट? आई डोंट इवन लाइक टू यूज दिस टर्म्स दैट मच. However, she, the second person, would have to prove all of this, that her consent was invalid. इससे पहले किसी को ऐसे जेल हो, right? मतलब that only makes sense to me. If that is true, I'm completely fine with that. If somehow this is not true, then maybe it's a completely different thing which I don't know. तो conversations में आएगा ये सारी चीजें। And again, I don't want to be an asshole to Shweta, but I think he's definitely trying to make it sort of entertaining as well. Shweta is definitely trying to do that. हमारे जब लोग रिलेशनशिप में होते हैं, क्योंकि हम कैजुअली प्लानिंग करते रहते हैं, कैजुअली बातें करते हैं, ये काइंड ऑफ सिग्नल्स होते हैं इंडायरेक्ट, जिससे हम एक्चुअली कंफर्म करते हैं कि हे तू सीरियस है ना मेरे लिए, तुम्हारा आएगा वहां पे, तो भाई तुम इसको इग्नोर थोड़ी कर सकते हो। प्लस लेट्स जस्ट से आपने वादा किया, इग्नोर नहीं करो। मैं एक्चुअली किसी से शादी करना चाहता हूं, बट लेकिन बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस आई फाइंड आउट कि मेरे को इस इंसान से शादी नहीं करनी, मुझे डील ब्रेकर मिल जाते हैं, व्हिच कुड बी एनीथिंग यार। लेट्स जस्ट मुझे पता चलता है ये लड़की कुछ गॉसिप पता चलती है, फिर ये लड़की बहुत ज्यादा गॉसिप करती है, फिर ये मेरे घर वालों के बारे में कुछ कह देती है, कुछ भी किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, और जिससे चीजें दे फॉल अपार्ट। रिलीजियस डिफरेंसेस आ सकते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस आ सकते हैं, बिलीफ सिस्टम्स के डिफरेंसेस आ सकते हैं, 50 डिफरेंसेस आ सकते हैं यार दो लोगों के बीच। And it's just my personal thing. Shweta, आप should also add ये सारी videos जो हैं in the description. The links for these videos in the description. They're not here. क्योंकि maybe the guy made the case properly. I don't know. बीच में जहाँ पे रियलाइज करें ठीक है मेरा करियर की जो ट्रैजेक्टरी है वो मैच नहीं खा रही तुम्हारी, जैसे तुम जिंदगी में जिस तरह का इंसान चाहते हो, जिस तरह का लाइफस्टाइल तुम चाहते हो, लाइफस्टाइल डिफरेंसेस आ सकते हैं। लाइक पीपल डोंट रियलाइज यार, बहुत सारे डिवोर्सेस बिलीव इट और नॉट एक्चुअली में बहुत खराब नहीं होते, बहुत सारे डिवोर्सेस होते हैं फॉर द रीजन क्योंकि एक्चुअली में डिफरेंसेस हैं। दीस पीपल डू नॉट बिलोंग विद ईच अदर, एंड वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हो रहा है, दे जस्ट सिंपली रियलाइज एज पीपल दे आर हार्मफुल फॉर ईच अदर। पर्सनालिटी वाइज लड़ाइयां भसड़ नहीं हो रही, नेगेटिविटी क्रिएट हो रही, बिकॉज़ दीस टू पीपल डू नॉट गो अलोंग विद ईच अदर। इट हैपेंस। द फ्रीडम टू मेक अ डिसीजन अबाउट योर लाइफ नाउ कैन कॉस्ट यू 10 years in jail. इमेजिन ये ह्यूमन लिबर्टी, एक लिबर्टी का इशू आ गया भाई ये तो। Okay. Once again, if it's done under the pretense of marriage, before sex, do I have to mention that my partner that I don't want to marry her? Wouldn't that kill all the intimacy? No, you don't have to mention that. But you also don't have to make it so. See, you don't have to make it so that you are only having sex with the pretense of marriage. Pretense, is that the right word? Let me just make sure I'm not speaking out of my ass completely.
Pretense. What does it mean? An attempt to make something that is not the case appear true. Does that make sense? So if you're having sex with someone with the pretense of marriage, does it make sense? Yeah. A claim to have particular, अच्छा ये तो खैर अलग चीज़ हो गई. But yeah, if with the pretense of marriage, if you're having sex with someone, then the consent can be invalid. अगर तुम्हारा मैरिज शादी करने का प्लान नहीं था उस टाइम पर, she will have to prove all of that. So you don't have to do that. You don't have to go out, right out, you're in a room with someone and you're like, oh, by the way, I'm not going to marry you. No, you don't have to do that. Who says you have to do that? Once again, don't take my advice as a life advice right now. Because we need to do more research about this. ये नया लॉ आया है, नया एक्ट आया है. We need to fucking know कि कौन सा एक्ट, कौन सा सेक्शन, what the fuck are we talking about here? Shwetab is also listening to a thing. And I hope he has done more research. If he hasn't done any more research, then it's again very irresponsible of him to make a video like this because it is fear-mongering. If he has done a lot more research than this, then maybe I'm completely wrong, and that's a possibility. ह्यूमन फ्रीडम का इशू है, एकदम बेस पे ये डिसीजन है कि तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है जैसा तुम चाहते हो भाई. तो सांस लेने का अधिकार नहीं है. तुम्हें जीने का अधिकार नहीं होता जैसे तुम चाहते हो जनरली किसी भी सोसाइटी में. ये तुम्हें जीने का अधिकार होता है जैसे तुम चाहते हो, अनलेस तुम दूसरों के जीने के अधिकार को रोक रहे हो, राइट? So this rhetoric is not very helpful. नहीं रहना चाहते, ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते. जब तुम्हारा मन करे तुम कर सकते हो डिसाइड भाई, फॉर वेरियस रीजंस, एंड ये पर्सनल चीजें हैं. एज लॉन्ग एज टू कंसेंटिंग एडल्ट्स, लॉफुली लीगली टू कंसेंटिंग एडल्ट्स आर इन्वॉल्वड इन अ रिलेशनशिप, भाई इस लॉ का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए. एज लॉन्ग Exactly, because the consent, because that's not what consensual. अगर मैं कंसेंट कर रहा हूँ किसी एक चीज पे और मुझे पता नहीं है कि मैं किस चीज पे कंसेंट करूँ, तो that consent is not consent. Oh my God. भाई कोई क्राइम, वायलेंस, असॉल्ट, हरासमेंट ये सब कमिट नहीं हो रही, तो व्हाट डज लॉ हैव टू डू विद एनीथिंग? जहां पे दो कंसेंटिंग एडल्ट्स ने, दो एडल्ट्स ने डिसाइड किया कि हम सेक्स करेंगे दूसरे से. कोई बेवकूफ थोड़ी, दोनों इक्वालिटी, फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, दोनों इक्वल हैं दूसरे से, इंटेलेक्चुअली इक्वल हैं, समझदारी में इक्वल हैं, ब्रेन प्रोसेसिंग में इक्वल है, आइडिएशन में इक्वल हैं, सब कुछ ठीक है. दोनों ने गंदी बातें करी, चैटिंग करी, खूब टेक्सटिंग करी, और फिर भाई दोनों के अंदर बायोलॉजिकली लेट्स से भाई इमेंस हार्मोन भरे हुए हैं जिनको अर्ज कर रहे हैं सेक्स करने को दूसरे के साथ, एंड देन दे ऑन देयर ओन विलिशन डिसाइड टू हैव सेक्स कंसेंशुअली. दोनों को मजा आया ना सेक्स में, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंसेंशुअली था भाई, क्लियरली बोथ एंजॉयड. जिसे सेक्स नहीं कर Is Shwetab completely missing the point? Am I? विवेक भाई तू तो बता ही सकता है. मत करना है, मत करो. I really want to know, Vivek, because you disagree with me on this. I really want to know what I'm saying. Does it make sense to you at all? भाई देखो भाई, मैं शादी के लिए बहुत सीरियस हूँ, और ये मेरे रूल्स हैं. वन ऑफ द सॉल्यूशंस, मे बी वोंट लाइक इट, वुड बी दैट अगर तुम रिलेशनशिप में हो और तुम चाहते हो फिजिकल इंटीमेसी, बट लड़की कह रही कि मैं शायद शादी के बाद चाहूंगी, देन, एंड आई एक्चुअली नो दीस केसेस, आई नो वन ऑफ माय, आई टॉक टू दिस पर्सन हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस में, एंड शी टोल्ड मी कि एक लड़का उसके साथ रिलेशनशिप में था, जिसने से क्लियरली उस लड़के ने कहा कि शादी बाद देखूंगा, लेकिन मेरे को फिजिकल इंटीमेसी मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज है. लड़की ने मना कर दिया, दोनों ने, लड़के ने रिस्पेक्टफुली रिलेशनशिप का ठीक है, गॉड ब्लेस यू, तुम ढूंढो तुम्हें जो ढूंढना है अपनी. एंड टेक दैट केस जिसमें लड़का कहता है कि हाँ नहीं शादी तो करेंगे यार, शादी तो करेंगे, ऑफ कोर्स विल गेट मैरिड, लेट्स जस्ट हैव सेक्स, ऑफ कोर्स विल गेट मैरिड, ऑफ कोर्स, व्हाट एल्स, डू यू थिंक आई एम नॉट गोना बी विद यू आफ्टर 2 years? ऑफ कोर्स वी आर गोना बी मैरिड इन द year and a half, एंड देन शी हैज सेक्स विद हिम एंड ही नेवर प्लान्ड टू मैरी हर. दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. गांठ फड़वाने से 10 साल जेल से बेटर ऑप्शन है कि भाई मे भी नल्ले रह लो और दूसरी जगह पे देख लो जहां पे सामने वाला इंटरेस्टेड है सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए. अगर वो तुमसे कह रही है कि मेरे को शादी के बाद करना है, तो मैं कहूंगा घंटा भी, कोई 1% एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है, निकल लो. भाई आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई कंसेंट फॉर सेक्स इज टेकन अपॉन मैरिज. लाइक कंसेंट सेक्स पर लेते हैं, कंसेंट शादी पर नहीं होता ना. कभी भी कंसेंट जो होता है ना, एवरी टाइम यू आर कंसेंटिंग टू एनीथिंग, इट डजंट मैटर सेक्स है या किसी भी चीज़ पे, उसके बाद गिव मी अ सेकंड. देयर यू गो. So it doesn't matter what it is that you are consenting to, right? Consent तुम्हारा ये हो गया. It doesn't matter what it is you are consenting to. कोई भी एक एक्ट हो गया, let's say you are consenting, ठीक है, एक एक्ट के ऊपर, ठीक है, तो कंसेंट कर रहा है किसी एक एक्ट पे. उस एक्ट की बहुत सारी अलग अलग इम्प्लीकेशंस होती हैं, राइट? सो ये सारी अलग अलग हो गई एक्ट की इम्प्लीकेशंस, ठीक है. Now for your consent to be valid, you need to understand all of these implications. अब हो सकता है कोई मिसकम्युनिकेशन हो कि तुझे ये इम्प्लीकेशंस नहीं पता थी या फिर इनमें से एक नहीं पता थी, लेकिन एट द सेम टाइम हो सकता है इस इंसान ने जिस दूसरे इंसान ने तुझे वो कंसेंट करवाया, उसने जानबूझ के ये इम्प्लीकेशन छुपाई. इन दैट केस इट कैन नॉट बी कंसेंचुअल. आज की बातें हो रही हैं यार, पता नहीं क्या बातें हो रही हैं. सो all of these implications, you need to be aware of all of these implications for your consent to be valid. That is the basic, मेरे बहुत ज़्यादा माइक की आवाज़ आ रही है. That is the basic idea of consent. For example, कोई you'll hate me for this, कोई एक 7 साल का बच्चा किसी चीज़ पे कंसेंट क्यों नहीं कर सकता?
क्योंकि तो 7 साल का बच्चा इज़ नॉट केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल द इम्प्लीकेशंस दैट कम्स विद द कंसेंट ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर एक्शन. लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अडल्ट्स, कि हम 20 साल के बच्चों की बात कर रहे हैं लेट्स से, तो वो कंसेंट कर सकते हैं, राइट. 7 साल का बच्चा क्या था, 7 साल का बच्चा वॉजंट केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. जो 20 साल के इंसान ने किसी चीज़ पर कंसेंट करा है, उससे कोई एक इम्प्लीकेशन छुपाई गई है. डज दैट मेक सेंस टू यू? हाय तो बोल दो. हाय मेरे भाई लक्ष्य, कैसा है? ये सॉल्यूशंस नहीं है, ये प्रिवेंटिव मेजर्स हो गए. सॉल्यूशन है दिस इज बेसिकली विवेक, हम लोग जब वो देख रहे थे ना, आई डोंट नो हाउ मच डू यू रिमेंबर दैट, जब हम कांट की थ्योरी के बारे में देख रहे थे, द थ्योरी ऑफ मैक्सिम्स, वी वेंट ओवर दिस इन अ फ्यू स्ट्रीम्स अगो एज वेल. और जब हम वो थ्योरी और मोरालिटी और वो सारी चीज़ें देख रहे थे, तो उसमें यू नो वी वर टॉकिंग अबाउट 2 थ्योरीज, एक यूटिलिटेरियनिज्म एंड एक जो कांट की थ्योरी थी, द थ्योरी ऑफ मैक्सिम्स. तो लेट्स जस्ट सी व्हाट, क्योंकि कंसेंट का आइडिया वहाँ से इज इट्स अ गुड प्लेस टू टेक कंसेंट्स आइडिया इज मैक्सिम्स. The maximum of quality, the maximum of quantity. Okay, that's not what I'm talking about. I have on my thing the maximum of quality. Be truthful. Only say that which you have. Do you know Osho? I know of Osho. There are 2 types of maximum. Yeah, I'll just take it out of my personal notes. And एक चीज़ और मेरे ख्याल से जो विवेक तूने उस दिन मिस कर दी थी, I think you left by that time. There is a thing called burden of proof, and I need to make that clear as well. And this is very important to understand. When you're watching videos like these, this is very important to understand. Burden of proof क्या होता है? Do you think consent on sex upon marriage is taken because in Indian society virginity matters? Like society wouldn't accept if the girl, if she maybe it's her choice. That's all. Maybe that's all it is. हो सकता है what you're saying is right as well. Probably it's gonna be, and probably her choice is affected by those things that you're talking about, right? But again, it is her choice at the end of the day, right? So burden of proof क्या होता है? We're gonna need to understand this. Burden of proof, you know, this is a thing on logic. जब तुम लोग किसी से बात करो, किसी से डिबेट करो, कुछ भी करो, मैं कहता हूँ भगवान है, भगवान ने सब कुछ बनाया है. लेट्स नॉट गेट इनटू गॉड एक्चुअली, लेट इट बी. मैं कहता हूँ कि मैं उड़ सकता हूँ. वी आर डिबेटिंग दिस. मैं कहता हूँ कि मैं उड़ सकता हूँ. तू कहता है कि मैं नहीं मानता, प्रूव करके दिखा. मैं कहता हूँ तू प्रूव करके दिखा दे, मैं नहीं उड़ सकता. तू कहता है कि नहीं उड़ के दिखा दूँ. मैं कहता हूँ मन नहीं है मेरा दिखाने का, बट मैं उड़ सकता हूँ. सो जब मैंने क्लेम करा है ना, मैंने एक बहुत बड़ा क्लेम करा है, तो जब बर्डन ऑफ प्रूफ है, उस क्लेम को प्रूव करने का बर्डन पहले मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं है डिसप्रूव करने का. तो इफ अ गर्ल इज पुटिंग अ एलिगेशन ऑन समवन, द बर्डन ऑफ प्रूफ यूजुअली वुड गो टू हर फर्स्ट. पहले शी हैज़ टू प्रूव के ऐसे मैं एलिगेशन क्यों लगा रही हूँ, एंड देन द अदर पर्सन would have the burden of proof upon themselves to disprove it. You cannot disprove something which hasn't been proven. तो अगेन ऐसा नहीं है किसी ने जाके बोल दिया तुम, और नेक्स्ट थिंग यू नो तुम तो जेल में 2 साल के लिए, ऐसा नहीं है. Alright, did I go over consent? एक्शन ऐसे लॉज का भाई, वी हैव टू गिव द पावर टू मेक डिसीजंस. अच्छा हाँ, I didn't go on this, right? Alright, so this is again जो उस दिन भी बात करी थी, but still I'll repeat it once again. Hold on. This is Kant's theory. This from my personal notes, and take it for what it is. All right. Kant's theory is based on maxims, which is intentions. Right? Can you read it? Yeah. If everyone involved in planning for something with the knowledge of maxims consent to it, it is morally permissible. If not, then no good. So even if A makes a promise to B with the secret intent of breaking the promise, it would not be moral because B is involved and unaware of A's maxim, therefore cannot consent to those. Does that make sense? Do you think consent हो गया था? Yeah, I know the burden of proof. Most atheists do not deny existence of God, but they don't believe in God, and there's no God, and that is the right example. Most atheists, I think, most atheists do not deny the existence of God, but they don't believe in God because there is no God. Because there's no proof of God, I think you mean. Is that the right example? That is the right example. कि जब भी मैं कोई claim कर रहा हूँ, तो जो burden of proof है वो मेरे पे है to prove that claim before it is on you to disprove that claim, है ना? Because there is no proof of exactly. You got it right. Virginity of a woman is a thing. A lot of people have lot of stupid and biased opinions. जो कि मैं भी था.
I used to find it disturbing कि my girlfriend has had sex with someone else before. Oh, you have a girlfriend? I doubt. I'm just fucking kidding me. Fucking with you. Now I think how stupid and naive I was. It's fine, man. It's fine. We all were at some point stupid and naive, and that's the first step. Understanding that we're so stupid and naive. Not even the first step actually. जब ये चीज़ें होती रहती है ना तो it's nice in the sense कि it is also the first step, but it is also the first step in the second turning as well. तो फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक तुम्हारा बिलीव था, राइट, एंड a lot of things happened and then you realize कि how stupid and naive I was, and then you are like कि अच्छा अगर मैं उस टाइम पे इतना stupid and naive था तो मैं इस टाइम पे कितना stupid and naive हूँ, and then you go through another phase. So it's actually nice. To the people involved, we have to trust people कि इनके अंदर इतना basic level intelligence है कि they can deal with such things by their own, on their own. 10 साल की जेल क्योंकि सेक्स कर लिया किसी के साथ. Imagine this is where we are. Imagine No, that is not the. Oh my God, come on, dude. how open it leaves all men. That is not what anyone is saying. At least so far. अब इस lawyer का मैंने नहीं देखा. I have no idea about that guy. To fake fucking cases. तुमने प्रॉमिस किया ना किया हो, तुम डिस्प्यूट करते रहो बैठ के, मैंने नहीं किया था, करते रहो, केस चलता अरे उसने प्रूव कहाँ करा लेकिन? That's great, man. That's great. रहेगा. This is so fucking scary. It's insane. It's fucking insane. जिसको इस बारे में बात करनी है डिस्कॉर्ड पे आओ. हम लोग ऑलरेडी बातें कर रहे हैं. पूरा मैं ब्लूप्रिंट बना रहा हूँ कि हम प्रिवेंटिव क्या क्या चीजें कर सकते हैं और कहाँ प्रोटेस्ट है, क्या है, वो सब मैं डिटेल से इकट्ठी कर रहा हूँ. टाइम I guess I'll join Shatab's Discord and see what's what. ब्लूप्रिंट बनाने में. क्योंकि maybe I'm completely getting it wrong. But Discord is a place where we are uniting. Discord में एक अलग चैनल भी हम क्रिएट कर रहे हैं मूवमेंट को लेके. वहाँ पे आप आओ, इन्वॉल्व हो, सब कुछ करो. बाकी जिस क्योंकि सेक्स कर लिया किसी के साथ, bruh. हाँ, it is वही. He's speaking rhetorically, but I don't think ये ऐसे topics हैं जिसके बारे में we should be speaking rhetorically right now. It's the correct understanding of this topic is very important, right? Now, शताब ने एक और वीडियो डाल रखी है. Nobody cares about Indian men in India. Fake cases piling up. Now, fake cases होते हैं, of course होते हैं, without a doubt होते हैं. झूठा वादा करके बलात्कार किया, ये झूठे एलिगेशंस जितने आजकल इस देश में पड़ रहे हैं उनकी सारी सीमा पार हो चुकी है. अभी मैं पिछले हफ्ते की दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट देख रहा था जिसमें लड़की कहती है कि हम फेसबुक पे मिले 2016 में, वहां पे मेरे साथ शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाए गए, 2021 तक ये संबंध बनाते रह गए, फिर मैं जाके 2023 के एंड में ये एफआईआर रजिस्टर कराती हूँ सेक्शन 376 इंडियन पीनल कोड के अंदर. लड़का कहता है कि जी हमारे बीच में कोई ऐसी बात नहीं हुई, लड़की पहले ही शादीशुदा है, 2022 में उसकी शादी हो चुकी है. लड़का व्हाट्सएप चैट लगाता है, पुलिस रिस्पॉन्स में इस बेल एप्लीकेशन में कहती है हम इन चैट्स को वेरीफाई नहीं कर पाए. कोर्ट ने अल्टीमेटली एंटिसिपेटरी बेल दी इस लड़के को ये बोल के कि आपने लास्ट डेट ऑफ इंसिडेंट के भी 3 साल बाद ये एलिगेशन लगाई है, आफ्टर थॉट को रूल आउट नहीं किया जा सकता. बट सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि सेशंस कोर्ट ने ऐसे बकवास केस में भी एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी और आदमी को हाई कोर्ट आना पड़ा एंटिसिपेटरी बेल मांगते हुए. तो इमेजिन कर सकते. Alright, so yeah, ये उस बात पे what I was talking about the other day. Now, it is very important to understand कि दोनों चीज़ें can be true at the same time. The law can be fair and also it can be true कि जो courts होते हैं are usually biased towards women. That is true. That's what makes the situation scary. But we need to make that distinction. ये नहीं है कि एक चीज़ खराब है तो सारी चीज़ें खराब हैं उसके around. Right? We need to make that distinction. What he's saying here is, अभी ये जो छोटी सी वीडियो थी लॉयर की, I hope it at least demonstrates कि the issue is more complicated, is more nuanced. It's not as simple as that कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, right? I hope it demonstrates that at least. तो सब चीजों को रियल लाइफ में किसी इंसान को अपने तुम्हारे मित्र या अपने भाई अपने किसी भी तुम्हारे साथ तो तुम्हारी तो फटके चौरा हो जाएगी. बट अगर किसी के साथ हो रहा है तुम्हारे घर वालों के साथ और तुम्हें भागना पड़ा तो किसी इंसान की आंखों में देख लो कि यार कल तक ये इंसान हंस रहा था, खेल रहा था, चाय पी रहा था, बातें कर रहा था, जीवन के बारे में बात कर रहा था, जोक मार रहा था, हम यार टीवी शो देख रहे थे साथ बैठ के, हम शाम को देख रहे थे. आज जेल में बैठा रुआंसा हो रखा है, आंखों के गड्ढे आ रहे हैं, फटके चौरा हुई भी इसकी भाई, और मुझे पता है मासूम है लेट्स से, तो पता है क्योंकि उसके पास एविडेंस है. पूरा पॉइंट ग्रुप में आने का, अपने आप को सोसाइटी कहने का होता है कि हम जो सोसाइटी में अनजस्ट हो रहा है उसको करेक्ट करेंगे, तभी हम ग्रुप में हैं, क्योंकि हम सिक्योरिटी और सेफ्टी का प्रॉमिस कर रही है. एक इनहेरेंट प्रॉमिसेस होते हैं किसी भी ग्रुप में आने के कि हम जब 5 साथ में होंगे तो तुम्हें जो दोस्त भी हैं, 3 लोग या 4 लोग के साथ होते हैं तो तुम थोड़ा सा सेफ महसूस करते हो इनहेरेंटली. ये चुप्पा टैसिट एग्रीमेंट होता है. हम जब 4 साथ में हैं तो हमें पता है कोई भी चीज अगर कोई तीसरा भी इंसान हमारे साथ कर रहा है, हमारे अंदर कोई कुछ चीज कर रहा है तो हम 4 लोग आपस में सॉल्व कर लेंगे. True, that's completely true. यानी कि हम सोशल एथिक्स का रूल होता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है और हम विटनेस कर रहे हैं तो अगर हम अपने ग्रुप के अंदर हम सब डेमोक्रेटिकली आके उस चीज को करेक्ट करते हैं. ये समाज बहुत बड़ा गलत हो रहा है भाई, हमें खड़ा होना बनता है, हमारी सोशल एथिकल ड्यूटी है. अगर तुम नहीं होगे तो तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा. आज ये हो रहा है, अगर लड़कियां इसमें कह रही होंगी शायद ये चीज हमें भाती नहीं, अच्छी नहीं लग रही सुनने में, तो इसी समझना ये जितनी एंटी फेमिनिस्ट चीजें उसका उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता. मेकिंग फेक रेप चार्जेस या रेप के एक्यूजेशंस या किसी भी तरह के एक्यूजेशंस फेक जो हैं वो हार्म करते हैं रियल केसेस को भाई. जब तक ये Completely true. And this is something we need to understand. All of us need to understand this. And ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे religious उसमें भी लगाती है, but क्योंकि I see a lot of misunderstanding around this kind of things in religious context as well. जब कोई एक चीज़ होती है ना, जब कोई भी एक चीज़ होती है, let's say this happens, whatever this is, right? This happens इसके केस में. Does that make sense? ये चीज़ हुई है इसके केस में. फंडामेंटली यू डिसएग्री विद दिस थिंग. इस चीज़ से तुम्हारा डिसएग्रीमेंट है,
जो इसके केस में हुई है। लेकिन जो ये केस है तुम्हें बहुत प्यारा है और इसकी वजह से ये इस केस तुम्हारी साइड का भला हो गया इस चीज़ से। मेक सेंस? यू शुड स्टिल स्टैंड अगेंस्ट दिस थिंग इवन दो तुम्हारी जो प्यारी पसंदीदा चीज़ थी उसका बहुत फ़ायदा हुआ है इस चीज़ से। इफ़ यू फंडामेंटली डिसएग्री विद दिस फिलोसफी यू शुड ऑलवेज स्टैंड अगेंस्ट इट। वाई? बिकॉज आज अगर सेल्फिश होकर भी देखना, बिकॉज आज तो इसने तुम्हारी हेल्प कर दी, कल कोई तुम्हारी फिर से मारेगी, राइट? मेक सेंस? तो यू शुड ऑलवेज टेक अ स्टैंड लाइक दैट आई कंप्लीटली एग्री विद। Let's see what else do we have. I don't think I'm giving up on this fight और मैं चाहता हूं हम बहुत कायदे से यूनाइट करें। तो मैंने पिछले वीडियो में जो बात करी थी यूनाइट करने की बात करी थी, तो सबसे पहला स्टेप आता है कि एक जगह हो हमारे पास जहां पे हम सब बात कर पाएं दूसरे से, जगह जहां पे हम सब आ पाएं और डिस्कशन हो पाए। मेरे को जहां तक वो जगह लगती है, मेरे को लगता है डिस्कॉर्ड सर्वर है। अगर आपको दूसरा है ऑल्टरनेटिव तो नीचे कमेंट में लिखो जो तुम्हें लगता है बनता है, जहां पे हम सब डेमोक्रेटिकली बात कर सकते हैं। और वहां पे क्या हो सकता है, हम असाइन कर सकते हैं लीगल एडवाइस का अलग, तुम्हारा प्रिवेंशन ब्लूप्रिंट अलग दे सकते हैं, और एक कम्युनिटी एफर्ट यूनिटी एक अलग हो सकता है। मुझे एक ऐसी जगह चाहिए या फिर मैं चाहता हूं तुम सब ऐसी जगह पे एनरोल इसको देख के आता है गाइस, जॉइन माय डिस्कॉर्ड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर तुम्हारी जिंदगी चलती रहे तो अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा बॉदर नहीं कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं चाहता हूं अपनी जिंदगी में काम करते रहो। इंडिविजुअल कल्टीवेशन, इंटेलेक्चुअल कल्टीवेशन, एथलेटिक कल्टीवेशन और एकेडमिक कल्टीवेशन, वो है तुम्हारी चीज अनइंटरप्टेड रहे। तुम्हें कुछ क्षण अपनी जिंदगी के एक कॉज में देने। What if I agreed for marriage and had sex agreeing that I'll marry afterwards, but after sex I don't want to marry her due to reasons maybe she's toxic or I want time, etc. Could I be punished? No. Yes, you could be. In that sense, I would assume you could be. जितना मुझे समझ आ रहा है ये देख के, जैसे कि मैं यादव हूँ तो समाजवादी पार्टी के बहुमत में आने के still I should be against. यार I don't understand the cultural context around it. Because it's more corrupt party. If any party is more corrupt, you should always be against it. Yes, true. I said more because somewhere every party is corrupt. True, that's true as well. But I think जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, I think Vivek, that makes sense to me what you're saying. Okay, even if you believed it after you change your, that's where it gets tricky. That's where she can prove कि भाई नहीं तूने तो बोला था शादी के लिए, and that's where you have to prove कि मैंने बोला था लेकिन मैंने उस टाइम पे मैं तुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं कर रहा था. So that's where it gets tricky. True, completely I agree. And it not only gets tricky, it also gets scary because usually जो कोर्स वगैरह होते हैं would be biased towards the women, which I also understand. By the way, जो कोर्स women की तरफ biased होते हैं, I don't think होने चाहिए, but I understand. और पर्पसफुल फील कराता है। हम ऐसी जगह पे जहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर पाएं कि भाई लॉयर्स, पुलिस में जो है, पॉलिटिशियंस जो है, एक्टिविस्ट जो है, वो भी प्रेजेंट है, वो आपको बैठ के थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है हम बहुत ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट में भी घुस जाते हैं और नुआंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज आती है, That's what I'm telling you, brother. That's what I'm talking about. प्रिवेंशन ब्लूप्रिंट। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपने सुना हुआ है। क्योर हो गया कि हम ऐसे अमेंडमेंट्स ला पाते हैं चीजों में जिससे कि दोनों तरह के लोगों की सेफ्टी इंश्योर होती है, एक औरत की विमेन सेफ्टी और आल्सो मर्दों की फेक एक्यूजेशन से सेफ्टी। तीसरा चीज यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर बाय चांस हमें पेटिशन करने हैं फाइल या हम चाहते हैं सिग्नेचर करें या फिर कोई लेटर, Let's see, there must be some law against fake. There must be something. Section 376 of the Indian Penal Code. What is this? बस इतना ही है. अच्छा नहीं है. All right. So what is this? Let's see, guys. Let's see. You've taken ऊपर से देखें. A false allegation of rape can cause equal distress, humiliation, and damage to the accused as well, said the Supreme Court while acquitting a man in case for the offence of rape. Section 376 of the Indian Penal Code, while conviction in a rape case can be based solely on a testimony, that is something we have to worry about, of the prosecutrix. The court said that the caution and diligence must be exercised in evaluating. All right. What does it mean? Yeah, I never like to read stream पे without some music. थोड़ा सा एक वो रहता है ना, it becomes chill थोड़ा सा. तो ये सारी चीज़ें hyper होती रहती हैं. So let's play some nice music which I have the license to play. Hi. How are you guys doing, by the way? Anything new? Anything interesting going on with you? ऐसा Japanese music चल गया. In a special Saturday sitting, a 5-judge bench of Supreme Court, after taking sumoto cognizance of unusual developments in the Calcutta High Court, has stayed all the proceedings of High Court in the case where a single bench defied a stay order passed by division bench. The court took for an order passed by Justice Abhijit, मैं नहीं करूँगा कोशिश, of the Calcutta High Court, which called ignored an order by the division bench, which states the single bench order to the CBI probe into the alleged irregularities.
All right, nothing of interest. The 5-judge bench of the Supreme Court presided over Chief Justice D.Y. नाम पढ़ना बहुत मुश्किल है मेरे लिए. And comprising Justice of Sanjeev Khanna. We had that, okay. I heard that the Sumo to matter in the special sitting today, Saturday. Okay, all right. Let's read properly. We will stay further proceedings. We are issuing notice that State of West Bengal and the original petitioner before the HC High Court. We will list the proceedings on Monday again. We will stay all the further proceedings in the writ petition. I don't know what that is, and the letter patent appeal and the implementation of the single bench order referring to. Okay. Where is more information about that? Okay, what is this? IPC section 376. Where is more information about it? And the single judge bench. Okay. Punishment for sexual assault. If you don't mind me asking, and if it's not personal, how do you earn money? You can obviously choose not to answer. I can choose not to answer. No, but I work as a filmmaker, as a freelance filmmaker. विक्रम क्या हो गया? आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल. ओह, क्या है ये फिर? कौन सा केस था ये? फॉल्स रेप एक्यूजेशन. कैन वी ऑलराइट, maybe there is something. मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कुछ है नहीं. ये कौन सा है भाई? सुमोटो मैटर कौन सा है ये विक्रम? Senior advocate Kapil Sibal, appearing for the state of West Bengal, said that the state is also filing a special leave petition against the initial single bench order CBI inquiry. Senior advocate Dr. Abhishek Manu Singh, I don't care about the particular case. I want to know about the law. Do you like love ki video yourself? That is a question I will plead the fifth on. That is an American saying. नहीं यार, I don't like most of the content. जो मैंने खुद भी बनाया. I am more concerned about passing of an order without appeal. Alright. Also, imagine a couple having sex, both kissing, cuddling each other, and maybe the girl telling what sex position she likes, etc. Does this seem sexual assault? To me, it doesn't. Wait, what are you talking about? What do you mean? But a few weeks later, the girl accuses of rape because the boy refused to marry. Maybe the boy betrayed her and scammed her, but how the act... Okay. मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है ना विवेक को उस टर्मिनोलॉजी में, रेप की टर्मिनोलॉजी में. Let's get to that. See, I need to take everything जो मेरे माइंड में ना कि every conservation about speaking of these words and everything. I need to take all of this out. So I can speak ढंग से. So what is rape, right? What is it? Basically, in the most basic sense, the way I understand it, I could be wrong, and if I am, please tell me. So basically it is one party imposes themselves on the other party without their consent, right? So it is like one party has sex with another party without... Yo, what's going on? बहुत ही क्या ही बताऊँ what's going on without consent. That's what rape is, right? So it makes total sense. So what is rape? The first party imposes themselves on the other party, have sex with them, or do sexual things with them without the consent. Now, so then we go back to what is consent. Right? What is consent? Don't fall in love. It will be risky for the... No, it's not gonna be. The way I understand this so far, it's not gonna be. What is consent? You need to understand this. What is consent? Consent is basically two people, ठीक है, agreeing. No, first part must be men. No, that's not necessarily true, is it? Even if it is, it doesn't matter in this argument. But even if it is, I don't think that is necessarily true. But is bestiality and rape same in regards with having sex with animal asking for a friend? So consent means two people agree. मुझे पूरा नहीं लिखना. Agree.
ठीक है, दैट्स व्हाट कंसेंट मीन, टू सम एक्शन, टू एक्शन with the knowledge, with the complete knowledge. I'm not going to write the whole thing. With the, तो दोनों लोग तो ओके, बट इज रेप, एक इंसान दूसरे इंसान को सेक्सुअली वो करता है जो भी उसने करना है, राइट, विदाउट कंसेंट, दैट्स व्हाट रेप इज. व्हाट इज कंसेंट? कंसेंट के लिए दोनों पार्टीज को उस एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्लीट नॉलेज, कि अगर मैं किसी चीज़ पे कंसेंट कर रहा हूँ तो आई नीड टू नो व्हाट इट इज़ दैट आई एम कंसेंटिंग टू. नाउ इफ आई एम कंसेंटिंग टू समथिंग, once again, why are we I feel like we are going round and round in circles. I think there's a fundamental misunderstanding somewhere. या तो मैं कहीं पे अटक रहा हूँ या फिर I'm not able to explain it ढंग से. So two people agree to action with understanding. You means understanding. If a girl broke up with a boy after some time, does a boy take some action as the girl did? Wait, what are you talking about? I don't think you're getting it at all. I don't think you're getting it. या फिर maybe phrase your question अलग तरीके से, या तो मैं नहीं समझ पा रहा question. Anyways, so that's what consent is. Consent में दोनों लोगों को understanding होनी चाहिए. What is consent? That is the point. What is consent? I feel like this is my definition of consent, the best I have, right? Consent, it's from the Kant's theory. Once again, theory is based on maxims. Maxims yani ki intentions. If everyone involved in planning for something with the knowledge of maxims, yani ki intentions, consent to it, it is morally permissible. If not, then no, it's not, right? So if A makes a promise to B with secret intent of breaking the promise, it would not be moral because B is involved and unaware of A's maxims, therefore cannot consent to those. I should get a rum or something every time I watch your streams. Sorry, carry on. Wait, what? What do you mean by that? So does that make sense? Consent वाली बात पे does that make sense? Okay. पेंट में वो होता है ना यार, इसमें एक टेक्स्ट टूल भी होता है ना कि नहीं होता? होता है ये तरह. Fuck, I could have just done this all along. All right. Okay. इंटेलेक्चुअल होती है ना स्ट्रीम. अरे यार, आई हेट दैट वर्ड. ऑलराइट, ठीक है. यस, आई हेट दैट फकिंग वर्ड. Okay. Okay, so first of all, I'm not speaking for those boys who have ill intentions of sex and breaking the promise, but that's the whole point. That's the whole point. वो law है ही उन लोगों के लिए, as far as I'm understanding it. That is the entire point. If there is a miscommunication, that's a different thing. Now, अब वो miscommunication इतना तगड़ा है या फिर वो बंदी इतनी crazy है, she takes you court for it. Dude, I've been with people, right, in my life. I've never been to court. Well, okay, that sounded wrong. I didn't do anything ever कि मुझे court जाना पड़े. नहीं गया, right? Most people, पहली बात तो you need to understand, this is an extreme minority. And what Shwetab is talking about how दो लोग consenting adults और ये सारी चीज़ें, Shwetab is talking sense, right? But he's talking sense in the world जहाँ पर, he's talking sense in the world जहाँ hookup culture वगैरह is common and everyone is cool with sex. That's not the entirety of our country. In fact, that's not the majority of our country. Majority of our... Yeah, guys. I mean, if a girl broke up with a boy, will the boy take legal action against the girl? Why should he? No, I don't think he should. How do I increase the size? That's the question every guy wants to know the answer to, right? Which word you hate talking about? I don't like the word intellectual. मुझे वो वर्ड ही इतना pretentious है, मैं क्या बताऊँ? Dude, how the fuck am I supposed to do this? All right.
I never thought I would be doing this on stream, but here we go. Right? Also, let's just address the irony that Vivek Bindra is talking about consent. No, but I know there's a person behind the account, so I'm talking to the person behind the account. And I like, जैसे मैंने तो उस दिन बोला था, I like the fact that you have this fake account, so you can be completely honest. I like that fact. ठीक है. So, what is rape? One party imposing sexual will on the other without consent. That's my definition. That's my understanding. अभी मैं कोई और definitional understanding नहीं कर रहा. I should also write this. My understanding. Right? This is the most important thing. This is my fucking understanding. Alright? अब मैं इनको move कैसे करूँ यार इन चीज़ों को? Guys, can someone teach me this? A little help here. I don't want to waste a lot of your time with this, but मुझे समझ नहीं आ रहा. How am I to move these things? Select all. There you go. Wow. Wait, what? Okay. ठीक है. I don't need to move them right now. One party imposing sexual will on the other without the consent. So, अब clearly we need to understand. इनको ये कर देते हैं हम. Right? Now there's no issue. Crop से move करते हैं. Thank you very much, unknown man. Who are you, God? Alright. So it is important to understand what is consent. That is the most important thing we need to understand. To understand this. Right? If touching and all someone without their consent is a crime, even single gay I've met, every single gay I've met should be in jail. I have met people who are gay and they haven't touched me ऐसे. But हाँ, I agree. If people are touching you, you can file a case against them. Sure. Bro, I can see FBI on my doorstep. भाई Discord join कर ले. Discord join कर ले. Do you think that legal age should be 16 for becoming an adult? That's something I'm not sure about. I'm not sure about that. I'm not sure. I'm really not sure. पहले तो मुझे समझना पड़ेगा कि why 18 क्यों रखी गई है, उस to understand कि 16 क्यों करनी चाहिए. So that's the issue. So we need to understand what consent is. I'll do this. There you go. Right? It's important. This is important. I keep telling myself this is important because it feels like I feel like I've had this conversation, but it's okay. Alright. So what is consent? Consent की जो requirements हैं वो है कि every party. There you go. For the consent to be valid, every party involved should be aware of all the intentions of all the members. I'm really trying my best to make this as clear as I can make it. Right? So that makes sense. That should make sense, right? So that's what consent is. I think Lakshya meant that when walking in crowd, you touching other people without consent. So everyone of us. No, that's not what he meant. I don't think so. अच्छा तू इसलिए FBI वाली बात कर रहा था. Okay. So, all right. So once again, I think it's very simple. What is rape? One party imposing sexual will on the other without consent. Right? What is consent? We can talk about sexual will. We can talk about all of those things. But right now, what is important is what is consent. For the consent to be valid, every party involved should be aware of all the intentions of all the members. Does that make sense to you? I love you too, or I want to marry you. All right. So अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, राइट? जो दो चीज़ होती हैं उसमें पहली चीज़ हमारे पास आती है कि so how does something like this become rape, right? How does something like this become rape? If you promise and you knew
you were lying just to get in her pants and it can be proven, then you are guilty. Do we agree on this, guys? Do we agree on this? I need to know. क्या ही बन गई है stream? But do we agree on this? I think we would, right? We would all agree on this, I believe. If my girlfriend wants to have sex with me twice per week, but I'm okay with once a week, is it bad for our relationship? I'm figuring things out. No, I don't think it should be that bad. Okay, well, that's what relationship is, right? It's about compromise. Some weeks you have it twice a week, and some weeks you have it once a week, and some weeks might be bonus weeks for you or maybe for her. Who knows? भाई, unknown man, खाले माँ कसम के तू वर्जन नहीं है. भाई साहब लक्ष्य. All right. So are we on agreement, guys? इस बारे में we are on agreement, right? I hope we are. Now the whole thing gets scary. If you meant to fulfill your promise and couldn't, we are on agreement. Great. So I think that's where Vivek has an issue with. कभी I meant to fulfill my promise, but किसी reason से I cannot. Now, इसमें we need to understand a couple of things, right? There's a difference between. So these are हमारी ये चीज़ हो गई relationship में, right? ये हमारा 1 हो गया और ये हो गया हमारा second point. ठीक है, ये 2 point हो गए हमारे. Second point is the one which is complicated. First, but brother, if you're agreeing on the first one, so you see how it becomes rape, right? Second में तो I also agree with you. Second में तो I also agree with you. I'm just saying कि वो जो law है वो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए बना होगा probably. लेकिन जिस तरीके से शायद आपकी वीडियोज़ और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, it almost seems like कि वो law सिर्फ इसी चीज़ के लिए बनाया गया सेकंड के लिए. Shwetab is not even considering the first one. Right? क्योंकि फर्स्ट में what Shwetab is saying कि वो लड़की बेवकूफ़ है क्या, उसको नहीं पता क्या. You can make that case about anything. You can make that case about जो भी लोग स्कैम होते हैं. You can make that case कि वो लोग बेवकूफ़ हैं कि उन्होंने पैसे क्यों दिए. भाई स्कैम इज स्टिल अ स्कैम. कोई स्कैम क्यों होता है कि मैंने तेरे से पैसे मांगे, तूने मुझे पैसे दे दिए. वो स्कैम थोड़ी है. मैंने बोला कि तू पैसे दे दे, मैं ये करूँगा, और मैं वो नहीं करना चाहता था शुरू से ही, और ना मैंने करा, तब वो स्कैम बना ना. Now because it was involving money, it was scam उस तरीके से. बट बिकॉज जो कंसेंट है वो इनवैलिडेट हो गया इस चीज़ के वजह से, जो कंसेंट है वो इस चीज़ की वजह से इनवैलिडेट हो गया. दैट्स वाई दिस थिंग कैन बी कंसिडर्ड रेप. डज दैट मेक सेंस टू यू? सेकंड में तो आई एग्री विद यू. ऑलराइट. और जो सेकंड पॉइंट है उसको व्हाट मेक्स इट अ लिटिल मोर स्केरी इज जो कोर्ट्स यूजुअली फेवर गर्ल्स. दैट्स द थिंग. भेजें या किसी भी तरह के हम यूनाइटेड एफर्ट हो तो हमें चाहिए एक जगह जहाँ पे हम सब एग्जिस्ट कर पाएं. So we agree. I think if there is something you still don't agree with, just let me know. हम बात कर पाएं. राइट नाउ माय सजेशन इज डिस्कॉर्ड जो कि फ्री है. मैं अटैक मोड का उसमें तुम्हारे ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट है, वो सिर्फ अटैक मोड मेंबर्स के लिए, उससे कोई लेना देना नहीं है. तुम फ्री में आओ, ये सारी जितनी एक्टिविटीज बताई हम तुम्हारे फ्री में कंडक्ट करेंगे. वो नीचे तुम्हें मिल जाएगा लिंक. दूसरी चीज आती है, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात आती है, तुम पर्सनली क्या चेंजेस ला सकते हो इन चीजों से बचने के लिए. पहली चीज मैं कहूंगा कि भाई अपनी सिंपिंग पे कंट्रोल लाओ. भाई देश में भयंकर लेवल पे रील्स और इन सब के थ्रू बहुत तगड़े लेवल पे तेरे नाम लेवल की सिंपिंग बेची जा रही है, जो मुझे पता नहीं थी. मैंने आज तक रील कभी देखी नहीं है, जब मैंने देखी नहीं तो मेरे पास आती नहीं है. और मुझे जहां पता चला हिंदी कंटेंट में अभी भी बहुत ही, जो मुझे मेरे को 5 साल पहले बात करो, मैंने काइंड ऑफ सोचा डेंट मारो, चेंज मारो, लड़कों को थोड़ी सी मैंने स्थिरता, स्टेबिलिटी एंड अर्न में जो पर्सनल अर्न होती है उसकी तरफ मैं आपको लेके आया हूं. वो फेल हो गया क्योंकि रील्स और ये सब चीजें इतनी ज्यादा हाई इंपैक्ट कंटेंट है कि इनका आप काउंटर कर ही नहीं पाओगे. Wait, that is extremely self-centered to believe that he single-handedly changed how a lot of guys try to go after girls. That's extremely self-centered. काउंटर करने वाला है कौन हमारे देश में? जितनी ज्यादा बड़े-बड़े टॉपिक्स होते हैं, बड़े पॉडकास्ट होते हैं, वो आपको प्रमोट कर रहे हैं कि आप तो जवानी में रिलेशनशिप में आओ. सबसे बड़े क्रिएटर्स इस देश के सिंपिंग एम्पलीफाई करते हैं. ये चीज मैं बिल्कुल मुंह पे बोल सकता हूं किसी भी भड़वे के. और यहां पे आपको ये चीज जाननी पड़ेगी. आप तो अरे okay, calm down buddy.
ओके clever हो सकता है करते हो, आई डोंट नो। क्लेवर नहीं हो रही, यानी कि तुम किसी से अगर बात कर रहे हो तो तुम इंसान की पर्सनालिटी पे थोड़ा सा फोकस करो। ये जब गुस्सा होता है किसी इंसान से या होती है तो कैसे बिहेव करते हैं उनके साथ। मुझे इंसान थोड़ा सा स्टेबल ही लगा। अगर तुम्हें दिखता है किसी इंसान का ईगो बहुत हाई है भाई, बहुत ही ब्रिटल है, वो इंसान लेट गो नहीं करता चीजें, नेगेटिविटी को बांध के रखता है अपने पास, बहुत तेज रिएक्टिव है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत वायलेंटली बातें करता है, तो मैं आपको समझना चीजें बहुत बहुत खराब हैं ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से। मैं इन पे बहुत ध्यान से वीडियो भी बनाऊंगा, एलोंगेटेड वीडियो बनाऊंगा। प्रॉब्लम ये है, मुझे लगता है ध्यान को देखेगा कंटेंट। लेट्स बी फकिंग ऑनेस्ट, लास्ट वीडियो पे भी भाई कितना 1 लाख व्यूज आए, तुम्हें लगता है 1 लाख लोग हैं देश में? लेट्स बी वेरी जेन्युइन एंड ऑनेस्ट, कितने लोग हैं? तुम्हें लगता है एक्चुअली एक सिंपल 2 करोड़ की रील होती है तेरे नाम की जिसमें 2 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, वो जो देख रहा है, जिसको एक्चुअली देखने की जरूरत है, वो आके देख रहे हैं कंटेंट। थोड़ा सा Oh, come on, this is very stupid. Reels for obviously normal videos से ज़्यादा views आते हैं. Let's be real. Come on, guys. What are we talking about now? What are we talking about? 1 लाख views है, देश में सिर्फ 1 लाख लौंडे. Are you making the case that every guy in the world should watch your video? लोगों को घसी घसी के दिखाओ, घसी घसी के लाओ, खुद से अवेयर कराओ, खुद से समझाओ इन चीजों के बारे में, लॉस के बारे में। इसको बहुत बड़ा होने में टाइम लगेगा, लेकिन हमें बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। मैं दूसरी बता दे रहा हूं, इसमें कोई हमारा इन्फ्लुएंसर हमारा साथ ही नहीं है। इस चीज से रिपीटेड वीडियोस बनाना प्रॉफिटेबल नहीं है। पहले वीडियो में थोड़ा सा आग लगी, तीसरे में हमारी आग बुझ जाएगी। लेट्स बी फकिंग ऑनेस्ट, तुम्हारी भी यही है, ये तुम्हारा So in school, I have met many boys who get in relationships for only for sex, and later girls also realize that the boy used her. So if she wants, could file a rape case on the boy. I would assume she would have to prove that all of this happened only because he manipulated me into thinking he was going to marry me. And if he did that, it was manipulation. बट जब ये सारी चीज़ हुई, आई थिंक वो लड़का भी नाबालिग होगा, लड़की भी नाबालिग होगी. सो आई थिंक वी आर इन अ कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन देन. ह्यूमन बिहेवियर है। अरे दीपिका दैट्स व्हाई एज ऑफ कंसेंट मैटर ना, क्योंकि कंसेंट इनवैलिडेट हो रहा था तभी. वो कर रही हैं लड़ाई हमारे लिए, हां तो बैठे हो, तुम किसी और पे डेलीगेट करके बैठो टास्क यार, जो तुम्हारी चीज को इम्पैक्ट करेगा। तुम्हारी फटेगी को टैग करके ट्विटर पे बुझ जाओगे, अरे प्लीज हमारी हेल्प करिए। अरे अभी से शुरू, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेट्स फकिंग कोऑर्डिनेट इस चीज को रियल इशू है हमारी जिंदगी में। प्लस तुमको ग्रेटर लव चाहिए अपनी जिंदगी में देन जस्ट लव फॉर कंपेनियनशिप। तुमको भाई भरपूर लेवल पे फ्रॉम एवरी फ्रंट, ईच एंड एवरी फ्रंट, एटलीस्ट इंडियन स्फीयर के अंदर कंटेंट की बात कर रहा हूं, कुत्ता बनना सिखाया जा रहा है। मूवीज में भी आज के टाइम पे, गानों में भी आज के टाइम पे सिंपिंग ही सिखाई जा रही है भाई, कलेक्टिवली है जो ऊपर से नीचे तक। वन ऑफ द मोस्ट दैट्स व्हाई ही लाइक्स एनिमल मूवी. इंपॉर्टेंट वर्ड जो आता है वो है केपेबल। ओनली अ सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन एम करता है कि भाई मैं अपनी इज्जत करता हूं इसलिए मैं अपना कुछ बनाऊंगा। इट्स अ फकिंग प्री रिक्वायरमेंट। और अपनी इज्जत करना तुम्हारे आल्सो प्री रिक्वायरमेंट है कि तुम अपनी सिंपिंग कैपेसिटी और जो तुम्हारी ट्रेनिंग हो रखी है सिंपिंग करने की भोसड़ी, या फिर तुमको ना जाने अनजाने में भटका के भोसड़ी के तुम्हें ट्रेन कर दिया गया है, उससे भी मुक्ति पा पाओ। I completely agree with it. I completely agree with all these things he's saying. मैं मजाक कर रहा हूँ एनिमल वाली चीज़ और ये सब, बट हाँ, of course, you need to be self-respecting. You need to have a vision for your own life without the girl. To me and to people I've seen, few things are more attractive than a person who has a great vision for himself or herself and it's willing to do a lot for that vision. Visionary कहते हैं ना हम लोग कि visionary होना चाहिए इंसान को. I think that's very attractive. उसमें टाइम लगेगा क्योंकि इतना नेचुरली आता है तुम्हारे उसमें, बिकॉज़ तुम्हारी सोशल कंडीशनिंग हुई है। तुम्हें सोशली बिहेवियर नॉर्मलाइज करना सिखाया गया है कि सिंपल बहुत नॉर्मलाइज चीजें, क्योंकि ऐसी लड़की पड़ती है और ऐसी कुत्ता पकड़ते रहो, ऐसे तुम्हारे फिल्म के हीरोज कर रहे हैं, तुम्हारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको बैठ के वॉच करते हो, इनकी वही सिंपिंग भोसड़ी के आदतें हैं और वही चूतिया। कौन यूट्यूबर्स हैं जो सिंपिंग करे? I honestly want to know. अगर if you guys know any of these YouTubers जिसकी शायद आप बात कर रहे हैं, please do let me know. I would want to watch some of their content. बातें करते हैं और लड़कियों के नीचे हम लेटे हैं, घुटनों पे डाल के अपने आप को खोपड़ी नीचे करके अपने आप को सबमिट कर दें। ये सब क्या सिखा रहे हो भाई? इक्वालिटी, एंटी वुमेन है। प्यार में तुम मुझसे इतनी सुपीरियर और गॉडेस हो, उतना ही चूतिया थॉट है जितना कि भाई प्यार में आदमी तुमसे सुपीरियर और आदमी तुम्हारा भगवान है। हमें गॉडेस बनाने में लड़की को 1 सेकंड लगता है, तो लड़कों को भी गॉड बना दो। ये कोई बात हुई? दोनों ही चीजें इक्वली एक्सट्रीम्स में है ना यार। इंसान है और बहुत I इंपॉर्टेंट really want to know who he is arguing with. I really want to know that. है इंसान को इंसान का दर्जा देना, क्योंकि क्योंकि I agree with what he's saying. I agree with what he's saying. मैं ये देखना चाहता हूँ कि ऐसे लोग हैं कौन से ये सब बोल रहे हैं और ये सब सिखा रहे हैं. के ऊपर दर्जा देते रहो तो तुम उनकी कमियों को भी फिर नजरअंदाज करोगे, और कमियों को ही नहीं तो उनकी खतरनाक टेंडेंसीज को भी नजरअंदाज करोगे। वो तुम्हारी तबाही मचा सकते हैं, तुम्हारी जिंदगी तबाह कर सकते हैं। वो चीजें जो कि एक्चुअली में ट्रबलिंग है, रेड फ्लैग्स हैं, रेड साइंस हैं, तुम सब नजरअंदाज कर दोगे। तो तुम्हारे सामने में वो चीजें दिख रही होंगी कि भाई इस इंसान की ये चीज बाकी बहुत डरावनी है, खतरनाक है। मुझे एक्चुअली जब होता है मुझे बहुत बुरा फील होता है, लेकिन क्योंकि मैं इसको अपनी बुरा सब कुछ बना के बैठा हूं, जिंदगी का सेंटर बना के बैठा हूं, तो मैं इग्नोर कर दूंगा कि मैं बस वेट करूं उसका मूड कब सही हो जाए। जहां इसका मूड सही हो जाता है मैं खुश हो जाता हूं। ये डरा Hello, just दोस्त, क्या हाल है? How are you? How's everything? How's your work, man? चीजें ना बोल रही है कि तू कुछ भी करने को तैयार है, उसको बेसलाइन उसके मूड स्टेट में लाने के लिए, जिसमें तू कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है बेसिक सेल्फ रिस्पेक्ट की। वो इंसान से तू इंसल्ट होने को तैयार है, कुछ भी बोल दे तैयार है, तू वायलेंस भी तैयार है। कुछ लोग इमोशनली वायलेंट होते हैं, अब्यूसिव होते हैं, असॉल्ट करते हैं। Probably talking about those who sell quick tricks to impress girls. Who are those people? How to impress girls? How to impress a girl? अगर लिखूंगा तो आ जाएंगी कुछ चीज़ें. The formal edit. रणवीर लवा दिया. All right. Reels आ गई. How to flirt with a girl. How to impress your crush. How to approach a girl, shared by Sanjana Sani. She's an actress, right? उसे काउंटर करने वाला है ही कौन हमारे देश में? जितनी ज्यादा बड़े-बड़े टॉपिक्स हो, जितने All right, calm down. ऐसी गंदी बातें करते हैं, घिनौनी बातें करते हैं जो तुम्हें साइकोलॉजिकली अंदर बहुत चोट मारती हैं। लेकिन मैं क्योंकि इसकी पूजा करता हूं, मेरे लिए सब कुछ मेरी जिंदगी का सेंटर है, तो मैं सुन लूंगा सब और मैं नॉर्मलाइज करता चलाऊंगा, नॉर्मलाइज करता चलाऊंगा। ये भी तो हो रहा है ना। ये कहां से आ रहा है?
कंप्लीटली एग्री, कंप्लीटली गाइस। इट डजेंट मैटर तुम बंदी से बात करो, बंदे से बात करो, तुम्हारे से वो रैंकिंग में ऊपर है, किसी भी हायरार्की में वो ऊपर है, नीचे है, कुछ भी। ये मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, इफ यू गाइस डिसएग्री विद दैट प्लीज लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक। आई फाइंड इट टू बी वेरी अट्रैक्टिव कि आई कैन बी exactly the same person with someone who's younger than me, older than me, who's much richer than me, much poorer than me, who's my boss, who's working underneath me. I find it to be very important for myself to be the person I am, and for the status, for the stature, not to change the person I am. I don't know if How to Impress a Girl can be categorized as same as simping. हाँ, I don't think so either. वो पता लगेगा इन लोगों की वीडियो देख के. Shwetab is talking about something specific. And but at the same time, how to impress a girl. ठीक है. इसमें भी वो इम्प्लीकेशन तो है ही ना कि तुम यहाँ पर हो, वो यहाँ पर है, तुम्हें इसको इम्प्रेस करना है यार. ओह गॉडेस, राइट? उसमें वो इम्प्लीकेशन तो है. How to impress a girl. But a lot of guys start off like that because they have no idea how to do it. Okay, I think a better question is how to be attractive. How to be attractive. I think that's a much better question than how to impress girls. से बात तरह की मेरी जिंदगी का सेंटर है. अरे यहाँ पे बस बीवी जब कुछ गलत है सॉरी बोल दो. क्यों सॉरी बोलते हैं भाई? हर इंसान अलग तरह का होता है. एक ह्यूमन डाइवर्सिटी नाम की चीज होती है. एवरीबॉडी इज फकिंग डिफरेंट. तो तुम्हें ये चीज कंसीडर करना पड़ेगा कि भाई कुछ चीज होती है जहां पे आप इरेशनल हो रहे हो, आपको बहुत ही इरेशनल चीज है, आप चीजें इतनी ज्यादा ट्रिवियल है कि आप सॉरी बोलते हो घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन 50 मैटर जहां पे आपको दिख रहा है कि भाई एक इंसान लेट्स से सिर्फ नार्सिसिस्टिकली मैं को सेटिस्फाई करना चाहता है और ईगोसेंट्रिसिज्म है उसके अंदर. ईगोसेंट्रिसिज्म मतलब होता है एक इंसान जो सिर्फ अपने वर्ल्ड व्यू से चीजों को देखता है. वो कभी कंसीडर नहीं कर सकता तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तुम्हारा नजरिया क्या है, तुम्हें चोट क्या लग रही है, तुम कहना क्या चाह रहे हो, उसको मतलब ही नहीं है. अब सोचो इस कॉन्टेक्स्ट में पुट करके बीवी जब गुस्सा सॉरी बोल दो. अब वो गुस्सा है कि वो ईगोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी जिंदगी में बस या तो हां है या फिर बस भाई. Oh, maybe he's also putting in that जो ये सर कपिल शर्मा और इन सब में जो ये सब होता है. I think maybe he's talking about that stuff as well. Maybe, I don't know. It's going good, bro, and thanks for asking. And how's your work going on? It's going good, man. It's going good. बेजैसी सिनेरियो चल रहा है उसमें. If anyone gets married and found one day wife is in adultery, men can't able to divorce them as we need high amounts of alimony. That's another very popular red pill talking point. I would honestly ask, check, yeah, whatever your name is. Do you know the laws around alumni? Because मुझे नहीं पता, मुझे honestly नहीं पता, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कितनी परसेंट देना होती है, कितना होता है. आई थिंक इट डिपेंड्स वेरी मच ऑन केस बाय केस बेसिस. बहुत ऐसे अजीब अजीब चीज़ें हुई भी हैं वेस्ट कंट्रीज़ में. हमारे यहाँ के alumni क्या है आई डोंट नो. डू यू नो? बिकॉज मैं क्यों पूछ रहा हूँ, मैं बताता हूँ. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, इसलिए मैं अज्यूम करूँ कि शायद तुझे भी नहीं पता होगा. बट यू हैव सीन अ लॉट ऑफ कंटेंट लाइक दिस व्हिच अगेन स्केयर्स यू. Now that's me assuming. I could be completely wrong, and that's fine. Zakir Khan said it the best. We all should be sucked londa. Mostly boys lose their self-respect for girls and follow them. It's very wrong. So boys should maintain their self-respect. Yuvraj, kya hai bro? I shared a Mohawk's video on Discord. Please watch it. It shows how virginity is still relevant in today's day and age. अभी देखता हूँ यार. Best way to impress a girl is to become successful and rich. Simple. Or maybe again. Can you be a visionary? Or see, that's why I think everyone needs to be fucking responsible. I saw some of the high court cases. All right, man. So on the live stream. Oh, all right. Maybe you know much more than I do. That's totally fine. But हाँ, मुझे ये लगता है कि जो ये alumni वाली चीज़ भी है, adultery should be a clear. I do agree with you on the point जो तूने ऊपर डाला कि adultery जब हो रही है तो you should get divorce easily if you want that. At the same time, there is a case for alumni, right? Okay, if you have a child together or any of these things. So there is a case to be made for alumni. There is. You might not agree with it, but there is a case to be made for that. However, the issue is कि how do it becomes tricky कि भाई कौन कितना देगा, कौन कितना दे सकता है and all of that. यार एक सेकंड में देखता हूँ मोहाक की वीडियो. Did you know there's a practice in Rajasthan where couples having sex on white bed sheets so just to prove if the girl is virgin after sex. All right, so that is, you guys are getting why laws like these can be important in a country like ours. खैर नॉट इवन इन अ कंट्री लाइक आर्स. वो तो किसी भी कंट्री में अगर तुम कंसेंट की वो लेके ही जा रहे हो तो कंसेंट तो वहीं इनवैलिडेट हो जाता है ना जहाँ तुम्हारी हिडन इंटेंशंस हैं. वन गाय हु वाज
handicapped. The judges asked him to pay the 50 lakh of rupees. How can the handicapped pay that money? So here's what I would imagine. I don't think भाई मैं नहीं कमा रहा 50 लाख रुपए, तो आई डोंट थिंक जज मुझे आके बोलता है कि 50 लाख रुपए दे. या नो विवेक मोटिवेशनल स्पीकर दैट इज मेंशन्ड इन द वीडियो. ओह ऑलराइट. चलो भाई वीडियो ही खोल देता हूँ. तो मेरे ख्याल से चिकॉन, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल यू, मेरे ख्याल से इट डिपेंड्स ऑन केस बाय केस बेसिस. आई थिंक इट वुड बी एक्सट्रीमली स्टूपिड फॉर जस्ट टू से समथिंग लाइक मतलब जितना पैसा मेरे पास सही नहीं उतना देते, राइट. आई डोंट थिंक इट वुड हैपन दैट ऑफन. आई डोंट थिंक सो. जो पॉपुलर केसेस होते हैं जो हमको वेस्ट से सुनने को मिलते हैं, मैं डिस्कॉर्ड खोल रहा हूँ अभी. डिस्कॉर्ड में कहाँ भेजिए ब्रो? युवराज कैन यू? ओके गॉट इट, फाउंड इट ब्रो. कॉपी लिंक. ऑलराइट लेट्स सी. देखो थंबनेल बनाया मैंने कैसे. इस सर्जरी का नाम था हिमेनोप्लास्टी, जो एक सर्जरी है जिससे लड़कियां वापस वर्जिन बन सकती हैं. 40 मिनट का समय लगता है, जहां महिलाओं की हाइमेन को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है. कि क्या आप कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल या फिर बिस्किट्स के पैकेट खरीदेंगे जिसका सील ही टूटा हुआ हो? इसी चीज के बारे में आपको अपनी बीवी के बारे में भी सोचना चाहिए. और इसी वजह से कई महिलाएं वर्जिन बनना चाहती है ताकि उनकी शादी करने के बाद उनका नया परिवार उनको एक्सेप्ट करे. आप गूगल करोगे तो आपको फेक हाइमेन भी मिल जाएगा. एक सुबह एक फीमेल. Yeah, bro, I also understand the need for laws to favor women. I also feel bad for women who get used in for their body. I just want to clear out the cases where the boy didn't had any ill intentions. I think it will be difficult. See, the issue is क्योंकि अभी जो मैं ऊपर पढ़ रहा था मैं पहले, जो मैंने ढंग से पढ़ा नहीं, इट्स समवट इम्प्लाइड के मतलब वही ना कि लड़की ने जैसे ही वो डाला तो पीपल कैन गो टू जेल. दैट मेक्स इट एक्सट्रीमली ट्रिकी. डिसेबल्ड दिल्ली मैन क्राउड फंड्स टू पे एलुमनाई. सर्च इट ऑन गूगल. भैया भाई 2 मिनट बस ये देख के करता हूँ. पेशेंट डॉक्टर इंद्रानी लोड के चेंबर. बट वन सेकंड, अगर एक केस गलत हुआ भी तो दैट डजंट डिस्प्रूव द होल एलुमनाई के लॉज वगैरह कैसे चलते हैं. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ दिस स्ट्रक्चर इज बिल्ट so that we can then make then we can make an informed decision कि ये चीज़ बेकार है कि बढ़िया है. So एक चीज़ बता दूंगा, please listen to this very carefully. There's a concept called Chesterton's fence. मैं क्या ही बताऊंगा. Chesterton स्पेलिंग भी नहीं बताऊंगा, मैं क्या बता रहा हूँ. Let's see if I can. The simple rule of thumb that suggests that you should never destroy a fence, change a rule, or do away with a tradition until you understand why it's there in the first place. कोई भी एक चीज़ तुम्हें चेंज नहीं करनी चाहिए, हटानी नहीं चाहिए जब तक तुम्हें पता नहीं कि वो चीज़ वहाँ पर क्यों है. इसको फेंस इसलिए कहते हैं कि अगर तुम कहीं पर जा रहे हो, ठीक है, तुम कहीं पर जा रहे हो, तुमने देखा अरे ये फेंस लगी हुई है यहाँ पर, तो तूने देखा कि भाई इस फेंस का क्या पॉइंट है, फाड़ के फेंको इसको, तो कुछ कर ही नहीं रही है. यू शुडंट डू दैट. स्पेशली अगर तुझे ये नहीं दिख रहा ना ये फेंस यहाँ पर क्यों है, तब तो तुझे बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ को उखाड़ के फेंकना चाहिए. व्हेन यू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ यहाँ पर क्यों है, इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है, ये अच्छा क्या कर रही है, ओनली देन यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि ये चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए या नहीं. सो व्हेन यू वॉच श्वेता वाली वीडियो, इट डजंट सीम लाइक ही इज़ फॉलोइंग दैट प्रिंसिपल. Or maybe he's done a lot of research अपने behind the scenes which I'm not aware of. But उसके videos में वो चीज़ मुझे नहीं दिख रही. Remember this rule, guys. Simple rule of thumb that suggests that you should never destroy a fence, change a rule, or do away with a tradition until you understand why it's there in the first place. किसी चीज़ का तुम्हें अच्छी चीज़ नहीं दिख रही, उसकी requirement नहीं दिख रही, it doesn't mean you should just destroy it. And that goes for all these laws and everything. A good example would be अगर 100 साल से किसी का मर्डर नहीं हुआ, क्या मर्डर को लीगल कर देना चाहिए? Of course not, right? Bro, your net speed is 900 Mbps. नहीं यार, my internet speed is much lower than that. How much is that? अभी कितनी आ रही है मुझे नहीं पता. अभी तो आ ही नहीं रही लगता है. Oh wait, what? हाँ नहीं, कम हो रही है ना, देखो. और शुरू में उसको खुद को लगता है गलत. एंड हाउ वुड यू इवन नो. चलो क्या देखना था, ये मोहक. डॉक्टर इंद्रानी एक गायनेकोलॉजिस्ट है कोलकाता में. पेशेंट की उम्र मान लो 30 के करीब होती है और वो बहुत एम्बैरेस्ड होती है.
जब डॉक्टर इंद्रानी पेशेंट से पूछे कि वो इधर आई क्यों है, तब पेशेंट इस चीज का जवाब भी तुरंत नहीं दे पाती। पेशेंट एक्चुअली डॉक्टर इंद्रानी के पास आई थी सर्जिकल प्रोसीजर के लिए, और पेशेंट ने कई बार डॉक्टर को कहा कि सर्जरी का नाम वो अपने डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में ना लिखे। डॉक्टर ने ये बात मान ली और उन्होंने पेशेंट की सर्जरी करी। और सबसे अजीब बात पता है क्या है, इस सर्जरी के बाद पेशेंट को अस्पताल में आधे दिन रहने की भी कोई जरूरत नहीं थी, बट पेशेंट अस्पताल के डिलक्स रूम में 2 रात रही। बाद में पता चला कि पेशेंट का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर भी गलत था। तो ये सर्जरी थी किस बात की, इतना सीक्रेट होने की क्या जरूरत है। इस सर्जरी का नाम था हिमेनोप्लास्टी, जो एक सर्जरी है जिससे लड़कियां वापस वर्जिन बन सकती हैं। ये सर्जरी एक्चुअली बहुत सिंपल है, 40 मिनट का समय लगता है, जहां महिलाओं की हाइमेन को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब हाइमेन वो फीमेल पार्ट होता है जो कई लड़कियों के लिए तब टूटता है जब वो पहली बार सेक्स करती है, जिससे उधर से खून बहता है। रिकंस्ट्रक्शन करके ये पार्ट मानो ओरिजिनल की तरह हो जाता है। अब आप बोलोगे मोह क्या बात कर रहा है यार, ऐसी चीजें इंडिया में अब थोड़ी होती है, पर ऐसा है नहीं। मुझे बस आपसे एक चीज पूछनी थी, क्या वर्जिन है? वर्जिन है क्या? डॉक्टर अर्थ शाह जो प्लास्टिक Oh shit, what the fuck was that? मुझे बस आपसे एक चीज पूछनी थी, क्या वर्जिन है? वर्जिन है क्या? वर्जिन है क्या? डॉक्टर अर्थ शाह जो प्लास्टिक सर्जन है, कहते हैं कि रीसेंट सालों में हिम्नोप्लास्टी सर्जरी की डिमांड हर साल 20 से 30% इंक्रीज कर रही है। अब सवाल यह है कि लड़कियां ऐसा क्यों कर रही है इंडिया में। ये एक फेसबुक पोस्ट है जो जादवपुर के एक मेल प्रोफेसर ने डाला था। टाइटल क्या था इस पोस्ट का, वर्जिन वाइफ। ये प्रोफेसर महाशय अपने फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं कि क्या आप कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल या फिर बिस्किट के पैकेट खरीदेंगे जिसका सील ही टूटा हुआ हो, इसी चीज। Okay, let's read it. Virgin Pride. Why not? Value oriental social counseling for educated youth. Many boys remain fool. They are not aware of a virgin girls as wife. Virgin girl is a like sealed bottle or sealed packet. Are you willing to buy a broken seal while purchasing a bottle of cold drink or as a packet of biscuit? मेरे भाई, how is this even analogous? चीज के बारे में आपको अपनी बीवी के बारे में भी सोचना चाहिए। It is the same case with your wife. How? How? A girl is biologically sealed from birth. Okay, he's going to explain how. Until it is opened, a virgin girl means many things accompanied as values, culture, sexual hygiene. To most boys, virgin wife is like angel. Am I a virgin? I fucked it when I was 12. No, you're Trevor. You're Trevor Phillips. एक लड़की अपने जन्म से बायोलॉजिकली सील्ड होती है। मोस्ट लड़कों के लिए वर्जिन वाइफ मानो एंजल के समान है। Okay, for me, this argument is so stupid that I don't even know where to begin. भी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। ये बस एक उदाहरण है ये दिखाने के लिए कि इंडियंस कितने ऑब्सेस्ड हैं वर्जिनिटी से। इनफैक्ट इंडिया में कई महिलाएं मॉडर्न मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स यूज नहीं करती जो ज्यादा एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होते हैं, क्योंकि उनको डर है कि इससे उनकी वर्जिनिटी चली जाएगी। पर ये तो 21वीं सदी है ना, हमारा देश इतना मॉडर्न हो रहा है, डेटिंग एप्स यूज कर रहे हैं लोग, ओयो रूम्स यूज कर रहे हैं। ऐसी बातें तो बस अनएजुकेटेड और पुराने ख्याल के लोग करते हैं, है ना? नहीं। ऑब्वियसली देनी तो वर्जिन लाइफ है, ऑब्वियसली। क्यों? नया आना चाहिए ना घर में, नया आना चाहिए, सेकंड वन थोड़ी चाहिए किसी को। चेन्नई से 26 साल की शिवानी शादी के लिए लड़के ढूंढ रही थी। अपनी तीसरी कॉन्वर्सेशन में वो एक 30 साल के आईटी प्रोफेशनल से मिली और उस लड़के ने उनसे एक सवाल पूछा, क्या वर्जिन है? वर्जिन है क्या? शिवानी ने कहा कि वो सवाल से ही दंग रह गई कि कोई इतना ब्लंटली कैसे पूछ सकता है ऐसी चीजें। आप है क्या? उससे क्या फर्क पड़ता है? मगर आप है या नहीं, उससे फर्क पड़ता है। हैदराबाद में एक एनजीओ वर्कर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि हमारे देश Once again, guys, remember, it's the same thing. The philosophy is the main point, not where it's affecting. Oh, एक second. Sorry. में हम मानते हैं कि वर्जिन होना एक पवित्र चीज है और वर्जिन महिलाएं बाय डिफॉल्ट पवित्र हो जाती है। और शायद इसी वजह से हमें ऐसे मैट्रिमोनियल एड्स देखने को मिलते हैं। और इसी वजह से कई महिलाएं वर्जिन बनना चाहती हैं ताकि उनके शादी करने के बाद उनका नया परिवार उनको एक्सेप्ट करे। पर हिमेनोप्लास्टी बस अकेला ऑप्शन नहीं है महिलाओं के लिए। इस डिमांड के लिए एक बड़ी सी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। जैसे इस प्रोडक्ट को देखो जो ऑनलाइन बिकता है, हाई वर्जिन ब्लड फॉर द फर्स्ट नाइट। ये प्रोडक्ट का नाम है और अब डिस्क्रिप्शन देखो। ये प्रोडक्ट टूट जाता है जिससे एक छोटी क्वांटिटी का खून निकलता है सेक्स के दौरान, जिससे लड़का विश्वास करेगा कि अरे लड़की तो वर्जिन है। ये तो थी पिल, आप गूगल करोगे तो आपको फेक हाइमन भी मिल जाएगा। इनफैक्ट एक मुंबई बेस्ड कंपनी ने कहा कि उनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स है इंडिया में आर्टिफिशियल हाइमन इंपोर्ट करने के लिए। और ये सब तो मैं इंडिया के शहरों की बात कर रहा हूँ, गाँव और छोटे शहर की तो अलग ही कहानी है। ये शादी हुई थी पुणे के पास के गाँव में। दूल्हा और दुल्हन दोनों एक ही कम्युनिटी से, इसको कहा जाता है कंजात भाट। अब आपको नॉर्मल शादी लग रही होगी, दूल्हा दुल्हन पंडित गेस्ट सब कुछ नॉर्मल है, पर शादी के बाद कुछ और ही होता है। दूल्हा और दुल्हन एक लॉज में जाते हैं जहाँ सबसे पहले दुल्हन की इंस्पेक्शन करी जाती है। पूरा उसके बॉडी पे कोई जख्म है कि नहीं वो चेक करते हैं, और जो भी पूरा लॉज का जो रूम होता है उसमें कोई नुकीला चीज ना हो ये पूरा चेक किया जाता है। इसके बाद दूल्हे को लॉज में भेजा जाता है एक सफेद बेडशीट के साथ। क्यों, ये आप भी समझ जाओगे। और अगर ये कपल परफॉर्म नहीं कर पाता तो उनके लिए मदद भी भेजी जाती है। तो हेल्प ऐसी है, दे आस्क यू डू यू वांट टू वॉच एनी काइंड ऑफ अ ब्लू फिल्म। अब जहाँ लॉज में एक परफॉर्मेंस चल रहा होता है, लॉज के बाहर सारे फैमिली मेंबर्स वेट कर रहे होते हैं। कई बार वो खटखटा के ये भी पूछते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं। जब मैच खत्म हो जाता है तो दूल्हा रूम के बाहर आता है बेडशीट के साथ और अब एक फाइनल मोमेंट आती है। Why do you have to make it funny? I was getting serious. Why do you have to make it fucking funny? Virgin Mojito, पता है मुझे तो बस Virgin Mobiles बोल गया तू. Bro, if I'm a virgin, means there's no problem in finding a virgin wife. Dude, honestly, if you really want a virgin wife, there's no issue. Honestly, there's no issue. Even if you're not, you just are a hypocrite, and that's fine. People can be hypocrites. Honestly, it's not illegal to be a hypocrite. It's right. जब दूल्हे से सब सवाल पूछते हैं कि क्या तुम्हारी बीवी, बट जब ये चीज़ पूरे कल्चरल हो जाती है देन इट बिकम्स ऑपरेशन, राइट? इफ इट्स एक्सट्रीमली इंडिविजुअलिस्टिक यू कैन बी हिपोक्रेट, बट इफ इट्स कंप्लीटली कल्चरल और पूरे सोसाइटी में ये चीज़ है तो इट्स एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव.
प्योर है या नहीं। अगर बेडशीट पर खून है तो दुल्हन अप्रूव्ड है और उसको बुलाया जाता है खरा माल। पर पंचायत शादी को अप्रूव करती है। इसके बाद दुल्हा और दुल्हन के परिवार से हर पंचायती मेंबर को 300 रुपए मिलते हैं। सब खुश होकर फिर अपने घर जाते हैं। पर प्रॉब्लम तब आती है जब बेडशीट पर खून नहीं होता। तब दुल्हन को बोला जाता है कि माल खोटा है और कई बार शादी कैंसिल कर दी जाती है। कई बार दुल्हन की पिटाई होती है। दुल्हन के परिवार से कोई बात नहीं करता और I'm not virgin. Life has fucked me every now and then. उनको एक फाइन भी देना पड़ता है मैटर Hasn't it? All of us. सेटल करने के लिए। और ये आज भी हो रहा है। पिछले साल ही राजस्थान के भिलवाड़ा एरिया से एक 24 साल की लड़की को वर्जिनिटी टेस्ट लेने के लिए मजबूर किया गया। मेरी सास ने मेरी मम्मी को फोन किया कि आज हम ये रस्म निभाएंगे और आप 2-3 जने जो भी लेडीज है उसको भेज देना। ये लड़की इस टेस्ट को फेल कर गई क्योंकि उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुई थी। टेस्ट को फेल कर जाने के बाद देखिए उनके साथ क्या होता है। शाम के टाइम मेरे साथ में मारपीट हुई, मेरे पति ने भी मारा, मेरी सास ने भी मारा मुझे। अपमान करना तो एक बात है, वो तो एक कदम आगे चले गए। 10 लाख रुपए का फाइन मांगे। 10 लाख रुपए। महाराष्ट्र में कंजर भाट और राजस्थान का सांसी समाज ऐसी कम्युनिटीज है जिनके खुद के रूल्स है। कंजर भाट समाज की तो खुद की रूल बुक है। 2000 में इस कम्युनिटी की पंचायत ने एक 150 पेज की लॉ बुक पब्लिश करी थी। Bro, what do you think? Did you think about COD game? It's a good game or not? Say your opinion, brother. यार I usually like इन games को, but मैं campaign player हूँ यार. COD मैंने Battlefield खेली थी last. COD तो बहुत time हो गया खेले हुए. Virginity shouldn't be a requirement for choosing a partner. Girls can lose virginity when they play a lot of sport. I get what you're saying. Not lose virginity, but I get what you're saying. Bro, what did you think about? हाँ भाई पढ़ा. It's fine. I like campaigns better though. Campaign games. But brother, उसकी मर्जी है ना. The way a girl can ask for a taller guy, अब the guy cannot control it. Same way, so he, dude, calm down. सहसमन जात पंचायत कायदा कानून और इस किताब में एक पेज है जिसका नाम है गुड़ जीती, जो बेसिकली कैरेक्टर टेस्ट है एक दुल्हन। Do you ever laugh even though you didn't find that chat funny? कभी ना कभी तो हंसा ही होगा यार. When I see someone is trying to make a joke. मुकेश मेनकर जो कंजरबाग पंचायत के एक मेंबर है, वो कहते हैं कि आपको इसको टेस्ट की तरह नहीं देखना चाहिए. हर पिता चाहता है कि उनकी बेटी का एक अच्छा कैरेक्टर हो. ये टेस्ट ये भी देखता है कि लड़का परफॉर्म भी कर सकता है या नहीं. कंजरबाग कम्युनिटी में प्रैक्टिस इतनी एक्सेप्टेड है कि इस कम्युनिटी की ऑलमोस्ट सारी महिलाएं, चाहे वो मॉडर्न शहरों में भी रह रही हैं जैसे मुंबई या पुणे, उन सभी को इस प्रैक्टिस से गुजरना पड़ता है. इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि कई महिलाएं टियर 2 या फिर टियर 3 शहरों से अपनी स्टेट बॉर्डर भी क्रॉस करती हैं अपनी हाइमेन रिकंस्ट्रक्ट करवाने के लिए. और कई शादी Here's what it seems like to me. ये जो states और culture वाली सारी बातें हो रही है ना, this probably seems like something of a societal effort to make stuff stable, which has gone too far in a culture which doesn't require it right now. Does that make sense to you guys? So like for example monogamy भी एक तरीके की एक restriction है, cultural restriction है monogamy भी, right? एक legal restriction है. Which खैर अब तो कहीं है. Kids are already small. Wait, what? अच्छा, okay, gotcha. Fuck you, मुकल. एकदम मुझे ना emojis हंसा देते हैं. It's not necessarily the chat, it's the emoji. क्या कहता है? So monogamy is also a cultural restriction so that the society keeps going better, because this is the best practice for any societies. Like अगर ज़्यादा मात्रा में monogamy हो या polyamorous relationships हो, तो monogamous relationships वाली society will usually perform better. To me, choosing a partner on how tall they are they virgin, their form of religious backgrounds is plain and stupid dumb. But people can have choices and preferences, man. That's fine. Well, you can also think कि हाँ उनका dumb preference है, dumb choice है. That's fine as well. But तो हंसता रहे बस. You have a government job, then why you then everything shout out? हैं? You have a government job, then ये मैं समझ नहीं पाया मेरे भाई समीर. But so that's a cultural restriction. ठीक है, तो कल्चर में बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जिससे सोसाइटी स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती रहे अच्छे से. ठीक है. Now to me this seems like something which has gone too far. That's what it seems like to me. महिलाएं भी इस प्रोसीजर को यूज करती हैं. जैसे डॉक्टर नीना कुमार सिंह जो एक गायनेकोलॉजिस्ट है, वो कहती है कि ऐसी महिलाएं अपने हस्बैंड्स को गिफ्ट देना चाहती है वर्जिन बनकर. हाँ जी, ऐसे भी गिफ्ट दिए जाते हैं हस्बैंड्स को. तो मेन सवाल अब ये है कि हमारा समाज वर्जिनिटी से इतना ऑब्सेस्ड क्यों है. ये है डॉक्टर तनिया, एक मेडिकल डॉक्टर, ऑथर और साइंटिस्ट. उनके माता पिता फर्टिलिटी डॉक्टर्स हैं. मेडिकल डॉक्टर. और 25 साल पहले उनके साथ एक बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ. Both my parents are fertility doctors, and they had a couple come into them after 7 years of infertility. And when they did the test, they found out that there is no reason why this couple should be struggling to have a child. This couple was extremely fertile. So at some point, after a lot of frustration, my dad finally asked him. He was like, "तुम क्या कर रहे हो?" So it turns out that for 7 years, this man had been penetrating his wife in the belly button. क्या बोला? For 7 years, this man had been penetrating his wife in the belly button. और अनफॉर्चुनेटली अभी भी Wait, how? Wait, what? You can do that? क्या मैंने गलत सुना? So it turns out that for 7 years, this man had been penetrating his wife in the belly. What the fuck? For 7 years. 7 साल. How?
It doesn't even make sense. What? Okay, right. I'm also a kid, and by that I mean I want to say when I was 8 or 9 years old. For 7 years, this man had been penetrating his wife with a belly button. और अनफॉर्चुनेटली अभी भी सेक्स एजुकेशन इतनी बड़ी नहीं है लोगों के बीच। महाराष्ट्र के थाने जिले की रहने वाली 30 साल अरे मतलब सेक्स एजुकेशन नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन ये तो कुछ अलग ही बात हो गई ना. Like we need sex education but not for this. सेक्स एजुकेशन नहीं है तो लोग ये करेंगे 7 साल तक. We don't need that for this. के व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बहन की हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि लड़की के कपड़ों पर पीरियड ब्लड के निशान थे। भाई को ने देखकर बहन के फिजिकल रिलेशनशिप का शक हो गया था। इसी शक के आधार पर उसने अपनी बहन की हत्या कर दी। Now, see, okay, this is interesting. Does that mean that Teddy won't be because no? No. Here's listen to this. एक बार फिर से इसको सुनो. बड़ी नहीं है लोगों के बीच। महाराष्ट्र के थाने जिले की रहने वाली 30 साल के व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बहन की हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि लड़की के कपड़ों पर पीरियड ब्लड के निशान थे। भाई को ने देखकर बहन के फिजिकल रिलेशनशिप का शक हो गया था। इसी शक के आधार पर उसने अपनी बहन की हत्या कर दी। So now, see, this has nothing to do with sex. This has nothing to do with period. This has nothing to do with blood. This has everything to do with everything else which makes people think it's okay to do that. दिखाता है कि सेक्स एजुकेशन की कितनी कमी है हमारे देश में। सेक्स और मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस के ऊपर सवाल तो हमारा देश करता ही नहीं है। That's not even sex education. अगर sex education है and still if a girl has sex with someone, तो should they be able to kill her? No, of course not. सेक्स तो बोलना नहीं चाहता आपसे। कहाँ एजुकेशन दोगे आप? हाँ। कई नेशनल मिनिस्टर्स ने तो ये तक कहा है कि सेक्स एजुकेशन बैन कर देनी चाहिए हमारे स्कूल्स में। हर्षवर्धन ने अपने ब्लॉग में दिल्ली के स्कूलों के लिए जो अपनी सोच लिखी है उसमें कहा है कि स्कूलों में सेक्स एजुकेशन पर बैन लगाया जाना चाहिए। आप पूछोगे कि मैं सेक्स एजुकेशन की क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि इसके बिना ही इतने मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में वर्जिनिटी के बारे में। How's your hymen? I mean, any boyfriends? आपकी ईगो मेरी सेक्स लाइफ हैंडल नहीं कर पाएगी ना। That's true. जैसी पहली चीज है कि अगर हाइमेन एक लड़की का इंटैक्ट है कितना कुछ है, that's true. तो उसका मतलब है कि वो वर्जिन है। पर ये सच नहीं है। ब्लीडिंग बस तब नहीं होती जब हाइमेन टूट जाता है। It's a piece of stretchy tissue, and if somebody is aroused enough, it will also expand. Just but more often than not, people are not aroused because they're nervous and they're having sex with the person. Which means that the bleeding happens as a result of injury, not from tearing the hymen. पहली बात है कि कई लड़कियों का हाइमेन ही नहीं होता जब उनका जन्म होता है, और हर महिला का हाइमेन सेम भी नहीं है। If you think this is a general opinion, the hymen doesn't cover it completely like this. It's actually more like this. There's already a hole in it. Some people have multiple holes in their hymen. Some people have one large hole. Some दूसरी बात है कि कई लड़कियों का हाइमेन बस सेक्स से नहीं एथलेटिक एक्टिविटी से भी टूट जाता है। इसी वजह से यूएन कहता है कि वर्जिनिटी एक सोशल और कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट है और ना कि कोई साइंटिफिक टर्म। ये हाइमेन का टेस्ट बस शादीशुदा लड़कियों के साथ नहीं होता, बल्कि रेप विक्टिम्स के साथ भी होता है, ये प्रूव करने के लिए कि रेप हुआ था या फिर नहीं। पर डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि कोई एविडेंस नहीं है ये दिखाने के लिए कि इस टेस्ट से हम प्रूव कर सकते हैं कि कोई That was the nice point, Nilesh. कौन सा वाला यार? लड़की सेक्सुअली एक्टिव है या फिर नहीं। can't look at somebody, examine them, even as a medical practitioner, and tell that they've had their hymen torn by sexual intercourse. अब आप बोलोगे कि मान लो एक साइंटिफिक टेस्ट आ भी गया, उससे प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाएगी, और आप सच बोल रहे हो। मेन प्रॉब्लम है हमारा माइंडसेट। जैसे मनुस्मृति का चैप्टर 9 एक पति और पत्नी की ड्यूटीज के बारे में बात करता है, और लॉ 72 कहता है कि एक पति अपनी पत्नी को छोड़ सकता है अगर उन पर कलंक लग जाए। अब क्योंकि हमारा देश इतना रिलीजियस है, इसी वजह से ऐसे रिलीजियस बिलीफ हमारे समाज में, और इस्लाम भी अलग नहीं है। इस्लाम शादी के बाद किसी भी फिजिकल रिलेशन को अच्छी तरह नहीं देखता, जिस वजह से वर्जिनिटी भी सेक्सुअली प्योर मानी जाती है इस्लामिक समाज में। नॉन वर्जिन से शादी करना गुनाह नहीं है इस्लाम में, पर कुछ स्कॉलर्स ने कहा है कि शादी वर्जिन लड़कियों के साथ की जाए। क्रिश्चियनिटी में भी यही है, जहां वर्जिनिटी एक होली ट्रेट माना जाता है। कैथोलिक चर्च मानता है कि क्रिश्चियंस को वर्जिन मैरी की तरह शादी तक वर्जिन ही रहना चाहिए। Over the last 20 years, in the However, I know we are now shitting on religion, but however, it's also the case कि जो लोग वर्जिन रहते हैं शादी से पहले, they end up having bitter marriages in the long term. So that's also the case. So once again, remember Chesterton's fence, guys. Remember that. Don't forget. the United States, these father-daughter ceremonies have been on the rise. Organized by conservative evangelical Christians, the balls declare purity as the highest value in a young woman's life. डॉक्टर महेंद्र वत्स जो गायनेकोलॉजिस्ट है और सेक्स काउंसलर है, वो कहते हैं कि ये मेंटालिटी हमारे दिमाग में बस गई है। वो कहते हैं कि सबसे कॉमन क्वेश्चन जो उनसे पूछा जाता है वो है कि मैं कैसे बताऊं कि मेरी बीवी या गर्लफ्रेंड वर्जिन है। कुछ लोग तो अस्पताल तक जाते हैं अपनी बीवी की वर्जिनिटी सर्टिफिकेट के We लिए। had a man come in with his fiancée, and they said, "हम सर्टिफिकेट बना के दीजिए कि ये वर्जिन है।" पर क्या किसी ने ये सोचा कि लड़कियों की वर्जिनिटी पर इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है हमारे समाज में? लड़कों की वर्जिनिटी का क्या? रामकृष्ण जी, क्या खाने के टेबल पर हंसी ठिठोली होती हो? जहाँ घर की लेडीज और बच्चियां हमें अपने हाथों से प्यार से खाना खिलाएं, वही घर है। अब ये सीन बस एक एग्जांपल है हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी का। प्यू रिसर्च एक सर्वे ने दिखाया कि करीब 90% इंडियंस एग्री करते हैं कि एक बीवी को अपने हस्बैंड की बात माननी चाहिए। ऐसे माइंडसेट का मतलब है कि लड़कियों पर रूल्स लड़कों से बहुत ज्यादा है। तुम्हारा गिटार लेके आओ जरा। All right. Another nuance is required here. लड़कियों पर rules लड़कों से ज़्यादा हैं. True. A lot of them are not meant for oppression. इनको oppress करना और ज़्यादा rules डाल के. A lot of them are also a result of oppression. Hear me out. एक लड़का 10 बजे के बाद घर से बाहर जाता है, एक लड़की 10 बजे के बाद घर से जाती है. This is a very common argument, right? Whether we like it or not, it is riskier for girls to be out alone at night. That is just the case. A lot of people cope with that risk by imposing external rules. हाँ, बहुत से लोग ऐसे भी होता है कि नहीं ये लड़की है तो ये घर में ही रहेगी. But I imagine in most of those cases it is coming from an intent of protection, not the other kind. Bro, you can't justify anything on Chesterton's fence. You might even justify Sati Pratha.
No, again, how much do you know about it? How much do you know about it? Right now, what is your age, Mukul? Nari Narak ka dwar hai. Not all, of course. By the way, Chesterton's fence is not supposed to justify anything. If you know about Sati Pratha, you would know why it started, how it started. And then you can make that decision to get rid of it. लड़कियों को प्योर innocent और obedient होने की जरूरत है, जिस वजह से चाहे गाँव Chesterton's fence is not supposed to justify anything. It's basically a rule of thumb that you need to know what you are getting rid of before you get rid of it. या फिर शायद बीवियां लड़कों को वर्जिन चाहिए. You always prefer buying first-hand goods and not buying. Like getting in a relationship and getting married. तो हमें like we want people like our wives to be more virgin. जब कलकत्ता से मुंबई प्रिया आई थी 22 साल की उम्र में, तब उन्होंने 2 लोगों को डेट किया. Now, this guy, let's take this guy for example. He wants his wife to be virgin, right? Why? Ask him why. The moment he makes the analogy, when you're buying a car, you need a first-hand car, you need a new car, you know that's coming from a place of objectification, because that is the first analogy that came to your mind is buying a car. So it is coming from a place of objectification. Otherwise, or unless या तो तुम बहुत ही अच्छे तरीके से explain कर सको अपना point, right? So Chesterton's fence applies here as well. जब शादी की बात आई, उनको पता था कि उनकी शादी ऐसे लड़के से होने जा रही है. And what if someone just comes and say, that's, I just want it like that. I'm insecure. I don't feel secure when my wife has been with someone else. Fine, man. You're insecure. All right. That's your preference. Fine. I get it. Individualistically, you can have a fucking preference. But when the whole society is imposing one particular preference on certain people, it becomes oppressive. I want a girl, a live girl, that's it. बहुत कंजर्वेटिव, जिसकी वजह से उनको हिंडोप्लास्टी का प्रोसीजर करवाना पड़ा. वो कहती है कि उनके पास और कोई चॉइस ही नहीं थी. मोस्ट लड़के मेरी कम्युनिटी में एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी बीवी वर्जिन हो. इस वजह से उनके लिए समाज से लड़ने से बेहतर है कि वो सर्जरी करवा ले या फिर आर्टिफिशियल पिल्स खरीद ले. डॉक्टर तनिया भी एक ऐसी इंसिडेंट के बारे में बात करती है. Last year we had a patient come in with her boyfriend and she was set up in an arranged marriage. She belonged to a very conservative community. So he said he's happy to pay for the procedure. He just wants to make sure she doesn't get abused in any way or if they don't find hymen on her. If you're born to say a very strict conservative community or a strict conservative family, then having or not having that hymen means life or death. अब ये भी गलत होगा कि सभी लड़के ऐसे हैं. कुछ लड़कों ने जिम्मेदारी उठाई है कि वो इसके खिलाफ लड़ेंगे. 21 जनवरी 2018 को 3 लड़के पीटे गए पुणे की एक शादी में. क्यों? Members of caste panchayat attacked a group of youngsters for taking on a medieval virginity testing ritual. ये 3 लड़के एक सोशल ग्रुप का हिस्सा है जिसका नाम है स्टॉप द वी रिचुअल, जो इस कम्युनिटी के 2 कजिन्स ने स्टार्ट किया, विवेक और प्रियंका. ये शुरू हुआ जब विवेक अपनी शादी करने जा रहे थे और उन्होंने अपने परिवार को बोला कि अपनी शादी से पहले वो इस टेस्ट को नहीं चाहते. उनके परिवार ने पहले बात मान ली, बाद में उन्होंने कहा कि वो टेस्ट जरूर करवाएंगे. इसके बाद विवेक ने एक फेसबुक पोस्ट किया. पंचायत का दबाव और बॉयकॉट होने का डर, समाज से पूरे बॉयकॉट होने का डर. तो ये लेकर मैं ये 2-4 पॉइंट्स लेकर मैंने फेसबुक पे शेयर किया. इस पोस्ट को कई लोगों ने सपोर्ट दिया, इंक्लूडिंग उनकी कजिन प्रियंका. विवेक ने कोई पोस्ट डाला था इसके रिगार्डिंग फेसबुक पे, इंस्टा पे. इसके बाद उन्होंने अपना कैंपेन स्टार्ट किया व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर. उन्होंने कई एनजीओ के साथ भी पार्टनर किया है अपने मैसेज को फैलाने के लिए. पर विवेक और प्रियंका को सहना भी पड़ा है अपने कैंपेन के लिए. विवेक कहते हैं कि उनको मीडिया और पॉलिटिकल लीडर से सपोर्ट मिल रहा है और वो एक लीगल एक्शन लेने की भी सोच रहे हैं इन टेस्ट के खिलाफ. पर उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है डेटा का. उन लड़कियों को जिनको मजबूर किया गया है टेस्ट लेने के लिए, उसके बारे में बात नहीं करना चाहती उनके साथ, क्योंकि उनको डर है कि अगर वो बात करेंगी तो समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा. और ये विवेक के साथ अब हुआ है. विवेक की बीवी ऐश्वर्या ने बताया कि जब वो पुणे के डांडिया फंक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रही थी, कई लोगों ने उनसे बात करने से मना कर दिया. 10-15 मिनट ही हुए थे, जिसके बाद ऑर्गेनाइजर्स ने डांस को बंद कर दिया. इस साल फरवरी में दिल्ली हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया Virginity test conducted on a female is unconstitutional. पर इंडिया में हम जानते हैं कि बस लॉ बनाने से जरूरी नहीं कि समाज में वो चेंज आएगा. लॉ तो दहेज के बारे में भी है, पर समाज में क्या चल रहा है? शादी के बाद से ही ससुराल जल लगातार उसे दहेज की खातिर प्रताड़ित किया करते थे. 4 सितंबर को अनन्या और हिना की संदिग्ध परिस्थितियों में ससुराल में मौत हो जाती है. क्योंकि उन्होंने हिंडोप्लास्टी की सर्जरी को ही बैन कर दिया. पर क्या कोई सर्जरी बैन करने से सोसाइटी चेंज होगी? इंडिया आंसर है कि हमें दोनों चीजें करनी पड़ेगी, लीगली भी और सोशली भी. लीगली करना शायद आसान है, मुश्किल आती है सोशल चेंज लाने में. विवेक और प्रियंका कुछ लोगों में से एक है जो इस चीज की आवाज उठा रहे हैं, पर इस चीज के लिए उन लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए जो बहुत पॉपुलर है ऐसी कम्युनिटी के बीच, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी या फिर एक्टर्स. ये वीडियो भी मेरा अटेम्प्ट है थोड़ा सा सोसाइटी चेंज लाने में. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज इसको शेयर जरूर करना व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि अवेयरनेस और फैले. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा जहां हमने बात करी. All right. What are your disagreements with what I said, guys? Truth about Bageshwar Baba. ये है 26 साल के बागे. 26 साल का हो? How to be a good wife? I wanted to watch this. Buddha Rashmi. I wanted to watch this as well. Because I have no idea. Someday I want to be someone's wife. I would want to be a good one, right? नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. डिस्कॉर्ड पे कुछ आया. देखो डिस्कॉर्ड पे कुछ आया. Who sent it? Guy, comment, chat करो. Chat पे डालो. किसने भेजा ये? I don't even know what that is. But हाँ. Are you watching the stream जिसने भेजा है ये? Wait, check Discord. अच्छा, तो मिला. Alright, gotcha. Let's see what this is. Ladies don't want to pay her EMI, so she tried to use her powers against the collection agents.
So here's something very crude I have to say. Do you call this lady a lady and do you call that man a man? Do you? Do you really? To be fair, भगा के तो मार रहे हैं ये भाई वालों को. मेरा सिविल स्कोर, यार मैंने सुना सिविल स्कोर चेक करने से भी कम होता है, तो इसलिए मैं करता ही नहीं. But this seems like an interesting subreddit. Do you call this lady a lady and do you call this man a man? No, I don't. Fucking animals. I just thought that thought if it was not recorded. Exactly. I'm not a girl, bro, and straight hair. Huh? What do people say about it? आंटी को बिल्कुल कोई शर्म नहीं है. Forget the men. तुम्हें खुद इज्जत नहीं है. सबके सामने ऐसे कपड़े फाड़ दिए while your whole family is watching and then they come and say don't objectify women. मैं मर जाऊंगा यही करते करते. अब तो डर लगता है भाई अपने साथ ऐसा ना हो जाएगा. I'll fucking die. But yeah. आंटी को बिल्कुल शर्म नहीं है. Agreed. Forget the men. तुम्हें खुद की इज्जत नहीं है. सबके सामने तुमने ऐसे कपड़े फाड़ दिए. Your whole family is watching. Agree. And then they come and say don't objectify women. What's wrong with saying that? तुमने एक चीज देखी और पूरी दुनिया को समझ लिया एक वीडियो देख के. This is we fall into these fucking bubbles. अपने हमारे जो आसपास ये छोटे छोटे bubbles बनाते हैं ना, we fall into these and we see the entire world to be that. Guys, जो लड़कियां बहुत ज़्यादा feminist दिखती हैं ना तुम्हें, जो इंटरनेट पे फेमिनिस्ट होती हैं, जो अपने घर में फेमिनिस्ट, जो हर जगह फेमिनिज्म चलाती रहती हैं, उनको भी दुनिया में ऐसे ही चीज़ दिखती हैं. जस्ट इसका उल्टा. उनको दुनिया में यही दिखता है कैसे लॉन्डों ने लगा रखी लॉन्डियों की. दैट्स वाई दे बिकम फेमिनिस्ट लाइक दीज. और ऐसे कई बार लड़कों को सिर्फ ऐसी ही चीज़ें दिखती हैं एंड दे बिकम वुमेन हेटर्स और फेयर मॉन्गरिंग के शिकार बन जाते हैं. आई एम सॉरी बड़ी, मैंने अपने डॉग को उठा दिया. बट गाइस प्लीज अंडरस्टैंड दिस. तुम्हें एक वीडियो देख के पूरी दुनिया की समझ नहीं आ गई है. ओह माय गॉड. Her family must be living in fear of getting poisoned every other day. Please understand this, guys. Please understand this. I do need to see this though. ये चीज़ जो शायद clear नहीं है मुझे. Burden of proof in rape case. I do need to see this. Burden of proof in rape cases. Law Insider, India. Let's see. मेरा पूरा argument यहाँ खत्म हो सकता है basically. मेरा पूरा का पूरा argument यहाँ खत्म हो सकता है just by watching this. It doesn't change my philosophy about it. But हाँ, it will reveal my lack of understanding at least. Introduction. In India, survivors of rape face many barriers to obtain justice and vital support services. I am anonymous, so I can share this. When I was 13, I got sexually assaulted by someone who I used to call Bhaiya. He locked me on the ground and rubbed his thing on my ass. I still might have an idea that Bhaiya lives. He's nearly 20 years old or so. Should I report him? You can, if that's what really holds you down in your mind, and if that's gonna give you peace, of course you can. Of course. However, let me add this. I'll never say not report him, by the way. I'll never say that not report him. But you need to come to an understanding of everything that's going to happen with you reporting that person, with you, with your family, and then you should report him. I do think you should report him, but you need to come to an understanding कि सारी चीज़ें क्या क्या होंगी. And
So you need to have those discussions as well. When a Raj drives rashly, Raj is a bad driver. When Simran drives rashly, women are bad drivers. Exactly. And dude, I make that joke. I make jokes on women can drive. I make those jokes. I don't mean them. I make those jokes because look how stupid it is to say. I'm playing a character who says shit like that when I'm making a joke like that. I'm not fucking Andrew Tate, right? But हाँ, I also fear sometimes कि मैं ये इतने जोक बनाता हूँ कई बार कई लोगों के सामने. I do fear कि मैं भी कहीं भाई unintentionally किसी को influence कर दूँ ये चीज़ सच में सोचने पे. Anyways, I'm not that influential, so that's fine. ये नहीं था. In India, survivors of rape face many barriers to obtain justice and vital support services. Several reforms were recommended after Nirbhaya incident in Delhi in 2012 and have not been fully implemented. Women and girls who survive sexual violence often suffer humiliating treatment at the hands of the police, courts, and medical professionals. They're also at risk of experiencing inadequate protection. The lack of support and justice for victims and witnesses during criminal trials can create barriers to justice. Alright, इसकी आवाज़ कम करूँ पहले तो. Better? Alright, I hope it's better. But even after facing all these difficulties and still... Yeah. I think a virgin wife can be good overall and marriage can be better. That's fine, man, if that's what you think. You can have that opinion and I can disagree with you. And we can do sociological studies to see who's right. I don't know who would be right in that case. Issue is जब वो चीज़ बहुत ज़्यादा normalize हो जाती है ना, it becomes extremely oppressive for one gender. That's the issue. But even after facing all these difficulties and still going through all the discrimination, finally reaching out to the judicial system for obtaining justice, there is even a bigger issue for proving that they are indeed a victim of an offense committed against you. One of the basic steps is laying down the evidence and the burden of proof. Alright guys, maybe I was fucking right. Guess fucking what? Seems like I was right. Or maybe this whole blog is completely one-sided. But seems like I was right. What is burden of proof? One whom does this burden of proof is on? On whom does this burden of proof is on? After all these, does the victim still need to through more need? कैसा लिखा हुआ है ये blog? And to go through more humiliation and all kind of tests just to prove that the offense has been committed against her, which left the victim broken and destroyed. Yes, they do have to do that. I'm sorry. We don't live in a perfect world. I'm really sorry, right? But if you love a girl and have great bonding, but then she's not a virgin, would you marry her? Just those. Concept. Guys, are you reading this? I'm sorry if I'm doing a horrible job at reading this. Don't forget that. In a controversial judgment of Mahmood Farooqi versus State of Delhi, Delhi High Court has acquitted people's lives. Director Mahmood Farooqi of rape charges. What does acquitted means? It means that छोड़ दिया, right? नहीं, it's the opposite. I cannot remember. Free someone, छोड़ दिया, right? I was right. All right. Bro, if you're a virgin and asking a virgin wife, no problem. But if you are not a virgin and asking for a virgin wife, that's a problem. I don't think even that's a problem. You're just being extremely hypocritical. That's the only problem there. You can have a preference. Dude, I can be short and want a tall wife. Right? A girl can be short and want a tall husband. I can be dark, want a fair wife, vice versa. So, these are preferences. Now, जो ये virginity वाली preference है, इसमें दिक्कत ये कि it is filled with a lot of implications. That's why it's a little problematic, I would say. Has been acquitted the director Mahmood Farooqi of rape charges. Then don't be a virgin, just fuck already. अरे क्यों भाई उसकी मर्जी? Fuck already. अच्छा, fuck. The argument for acquitted was the victim merely resisted the sexual assault and the concept of the negotiation of consent was not clear. This sparked debate on how consent should be implied when one says
no in a hesitate. Bhai, Vivek, I want you to read this. The argument for acquittal was that the victim merely resisted the sexual assault and the concept of negotiation of consent was not clear. This has sparked a debate on how consent should be implied when one says no in a hesitant manner. तो उस बंदी ने मना करा, थोड़ा सा hesitant तरीके से मना करा. Now, this brings us back to the Bill Burr comedy bit. You know, where, hey, no, it's a fucking no, but no, you're being so bad. Why would you? No, don't do that. No, that's not a fucking no. That's a bit Bill Burr की तरफ से, right? Consent is the only principle that provides any kind of difference between sexual intercourse and rape. In most cases, it is difficult to prove consent due to the lack of eyewitnesses. In the IPC, Section 375 states that offense is considered as rape if the consent of the woman is not obtained or is obtained by putting someone in fear of their life or their physical integrity. In Section 375, as explained, the consent refers to an agreement that a woman voluntarily gives up before a specific sexual act is performed. Consent refers to an agreement that voluntarily gives up before a sexual act is performed. This means that a woman have agreed to participate in the act if she says so verbally or in non-verbal communication. Now, यहाँ पर भी intention और maxims की बात नहीं हो रखी जो कि होनी चाहिए. But that depends, are you a virgin by choice or due to lack of opportunity? Oh, that's a good point, gentle. I will marry her and I want her to love me also. No conditions apply. Alright. So हाँ, ये जो highlighted text है यहाँ पर भी they're not talking about intentions. I think that's an important thing. To put it in simple words, consent must be voluntary, verbal or non-verbal. The person who gives consent must be capable of giving. This is important, guys. A person is only capable of consenting when they understand all the implications and when they haven't been lied to. Burden of proof under the Indian Evidence Act. The law of evidence is a vital piece of legislation that supplements the court's proceeding. It provides certain principles regarding evidence, which establishes a claim and enables the court to make a just decision. Documentary or oral evidence should be proved before the court to show or disprove of both parties. That's great. All right. Parties, contentions. Yeah. And the rule of evidence required the parties to put the best evidence in front of them to establish the case beyond the reasonable doubt. All right, guys. All right. So I was fucking right. That's the way it seems right now. I was fucking right. I'm sorry. I'm happy that I was. Not because I like being right, but because I think it is important to have this kind of a justice system, not the other kind. The concept of burden of proof is based on the idea of onus. Okay, what is this? I'll have to look it up. Hey, onus probandi and factum probans. I don't know what this means. The burden of proof remains constant while the onus shifts from party to another. All right. It makes sense. It's like just तरीके से हम burden of proof की बात कर रहे थे. Anyways, I think that's what it means. I'll just have a look. Honest provided dictates that the party making an affirmative claim must prove it. Yes, that's what it means. The burden. All right, we got it right. This principle remains the same in criminal cases, which is that the burden of proof is on the prosecutors to prove that the accused committed a crime. If they fail to do so, the accused is entitled to be acquitted. The Supreme Court has stated that putting the burden of proof on the wrong person could have negative effect on the judiciary. Yes, true. Exactly. Jetal, there is never lack of opportunity in sex. You can do with prostitutes anytime. So many places are there to lose your virginity. But I don't think that's what he means. I don't think that's what he means. I think he means if you don't have access to girls. Okay, but you have a fair point as well. Section 102 of Indian Evidence Act aims to find the party which is the burden of proof. Party which has the burden of proof, and that is upon the ones who assert a fact rather than one who objects or denies it. The burden of proof lies on the parties who claim. All right, we got it, guys. We got it. I was fucking right. That's all that matters. Vivek, I would like to know your opinion on this, if you have been following this. Section 103 imposes the burden of proof on the party who wishes to court to believe and act upon a fact. The principle that does not apply to the fact
that a particular statement is not true, or that there is a negative or affirmative aspect to it. One of my friends lost his virginity with and that's fine too, man. That's fine too. Do your thing, bro. Section 104 states that when admissibility of a particular fact depends on the existence of admissibility of the another fact, the party that wants to prove it will have to make the subsequent fact admissible. All right. In cases of custodial rape, dowry death, suicide of a married woman, and the absence of consent in rape, the burden of proof is on the accused. All right. Makes sense. Yeah, this article makes it very clear. In the cases of custodial rape, क्या होता है मुझे ये नहीं पता. If you rape someone in custody, custodial rape is a serious crime and grave violation where the aggressor not only takes undue advantage of his authority to control the individual, usually a woman, but also violates the individual's bodily integrity and the duty to care for and protect the citizen, their rights. Not sure what that means. Dowry death, suicide of a married, अगर ये सारी चीज़ होती हैं, then the burden of proof is on the accused. That is in contrast to the principle of the burden being placed on the accused. This is in contrast to the principle of the burden being placed on the accused. To prove that she was a victim of rape, a woman does not need to prove that she was actively resisting the attack and that was being committed to her. And these factors not being prevented does not indicate that a woman has already given consent. Rape in police custody. All right, makes sense. This has been stated by the Supreme Court in its previous rulings. It stated that it is not necessary for a victim to resist a rape attempt actively. मेरा YouTube channel delete होगा ये इतनी बारी rape हो रहा है ना जो. Actively keeping in regard for situations where the victim might fear for her life or even death. Fuck yes. We need to understand this as well. One of the questions, though, I can understand why someone would prefer someone taller with fair skin because it appears attractive to that individual, but how virginity is attractive to or important? वही तो मैं कह रहा हूँ. That's when it becomes problematic because the question is why is that your preference? But if it is, man. That friend told me to do threesome in other flat, but I refused to go into it. All right, man. All right. Fair enough. That's fair enough. Bro, you can write rape like this, and I was having typing. I was a fool after all. जब से YouTube हमने chat ठीक करी है ना, तब से we can talk about it easily. But this is important, guys. This is important. So, what if you were having sex and she wasn't really saying no? There is a case to be made. भाई अगर कोई बंदा चाकू गोली लेके खड़ा है कि नहीं, you better shut up right now. She's gonna fucking shut up then. Right? So it is very that's why I hate most YouTubers यार. भाई ये बहुत complicated चीज़ें होती हैं, इतनी simple नहीं होती. All right. The concept of consent is also the same in Canada and the UK. Both Canadian Criminal Code as well as the UK Sexual Offence Act 2003 laws explicitly define consent. The Canadian Criminal Code section 273 requires consent has to be categorically given. Nothing short of voluntary consent or agreement would be acceptable. The burden of proof is on the accused to show that he or she took the necessary steps to ensure that the victim was consenting to the sexual activity, which is similar to the principles in the UK's Sexual Offence Act. Grape को grape बुलाओ, then your channel won't get deleted. ये मैंने बहुत लोगों को grape बोलते हुए सुना है. True. बीवी का कर रहा था तब फूल नहीं था. मुकुल तो पूछ रहा था ना, आधे टाइम्स मैं चैट पे हंसता हूँ even when it's not funny. This was not one of those times. In Australia too, it has been stated that the consent is a determinative factor in deciding on sexual assault charges. The burden is on the accused to show that he or she took the victim's consent. In certain countries, the term grape refers to the presence of coercive circumstances instead of lack of consent. This is because of these instances usually occur when the victim does not consent to sexual activities. In India, courts have a duty to presume that the consent is absent if a claim is made by the victim.
And this is in accordance with the Indian Evidence Act 114A, Evidence Act, sorry. I think virginity is special, which is your gift to your husband or wife after marriage. Personal opinion. That's fair, man. If you have that personal opinion and you're living by that, that's fair. That's fair. The selection, this is a mode of ascertaining consent that is used in every civilized legal system. Surprisingly, the section was only added after the Supreme Court acquitted the accused in the Mathura grape case. Tukram versus the state of Maharashtra in 78. All right. After this case was ruled out, and there was a huge outcry since the accused was acquitted on the grounds that the victim did not resist during the incident, and there was no visible signs of resistance, meaning that the consent of the victim was not negated while committing the act, which led to an amendment under the section 114A and evidence. All right, gotcha. Nibba cheese dose. It look like nibby. All right, I don't know what that means. After the victim has alleged the absence of consent, the onus is on the accused. And all right, I think we are going in circles now. The onus is on the accused to dispel. Wait, after the victim has alleged the absence of consent, of course they have alleged the absence of consent. The onus is on the accused to dispel the presumption against him. The victim does not have to establish any further evidence to prove absence of consent for the accused to be presumed guilty. The presumption is vested in favor of the victim in such cases. Okay, now, all right, this is confusing me. So you think that these lawyers and Shwetabh somewhat are hiding all those nuances just to get hired and get views? Quite possible. देख, हो सकता है श्वेताब ने बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा रिसर्च करी जो कि मुझे पता ही नहीं है, राइट? दैट्स वेरी पॉसिबल, दैट्स वेरी मच पॉसिबल. उसके बाद ही रियलाइज के जो मैं अभी सोच रहा हूँ, जो मैं अभी तुमसे कह रहा हूँ, दैट्स वेरी सरफेस लेवल. हो सकता है उसने पहले ही सोची हुई चीज़, ये तो बहुत सरफेस लेवल चीज़ है, कुछ डेप्थ में जाके ढंग से समझते हैं इस चीज़ को. उसने आराम से अपना कुछ टाइम लिया, उसने रिसर्च करी, उसने सारी चीज़ें समझी. उसके बाद ही केम टू अंडरस्टैंड कि नहीं, जो ये लॉयर सिर्फ सरफेस लेवल पे बोल रहे हैं वो ही सत्य है और कुछ सत्य नहीं है. जहाँ तक लॉयर्स की बात है, उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी है बहुत छोटी रील में, तो दे कैन गेट अवे विद दैट. In many cases, the Supreme Court has held the burden of proof on the accused to prove that the victim did not consent. In many cases, the Supreme Court has held the burden of proof is on the accused to prove that victim did not consent to the sexual activity. In this case, a victim's testimony may not be the sole basis for conviction. Where are we? Other factors such as consistency of the victim's statement and other factors are laid down in the evidence. All right. Let's just read the conclusion here. In terms of... okay, I don't even know what this is. The burden of proof lies upon the individual who claims to have proof of the existence of the fact. Okay, all right, what does this mean? The theory or philosophy of law. Jurisprudence. Right. Jurisprudence. आप IBC बन के बेचोगे तो अलग बात है. Generally, if the prosecution states that some kind of offense has been committed against them, the onus is entirely on the prosecution to prove it. Alright guys, so conclusion finally, Vivek, you also listen. 18. That's why I have to be very, very careful while talking to you guys, and that's why I think Shwetabh and everyone else should be just as responsible while talking to you guys. Everyone should be. While interpretation these laws, while interpreting these laws, we should keep in mind that most India still lives in villages and are not educated, patriarchal society, and also lost of classism and casteism. True, completely true. Guys, let's Generally, if the prosecution states that conclusion. Generally, if the prosecution states that some kind of offense has been committed against them, the onus is entirely on the prosecution to prove it. But in a rape case, if your defense is where the girl has said yes, the burden of proof falls on the accused to prove that she did consent. If the girl has said yes, if that is your defense, okay. So the burden is completely on the accused to prove the victim did give consent during the occurrence of the events. The proof of this offense is established by cross-examining the complainant.
the complainant. The method of medical evidence is collected and used to establish/prove the fact that the accused was indeed guilty of committing non-consensual intercourse with the alleged victim. All right. अरे guys. ढक्के हंसता है नीलेश कभी चाप पढ़ के I noticed. अरे Alright. Generally, the prosecution. I need to understand. Generally, if the prosecution states that some kind of offense has been committed against them, the onus is entirely on the prosecution to prove it. But in a rape case, if your defense is where the girl has said yes, if your defense, fuck you, why would you write it so? Oh my god. Mukul, there is nothing nearby if you're a virgin. And bro, I already earn 10k USD from this channel only, and if I want, I can pick any girls, and I have a lot of girl friends, just friends. Chill, chess, those you don't need to worry about it too much. Alright, it makes sense. So guys, this is the most important thing we need to understand. Generally, if the prosecution states that some kind of offense has been committed against them, the onus is entirely on the prosecution to prove it. So basically, अगर तुम किसी ने आके बोला कि भैया तुमने मेरे साथ ग्रेप करा है, तो it is on them to prove it. लेकिन in rape case, अगर तुम्हारा डिफेंस ये है कि नहीं इन्होंने तो हाँ बोल दिया था, then the burden of proof falls on the accused to prove that she did consent actually. Alright guys, so we're good, we have an understanding. So the burden is completely on the accused to prove that the victim did give consent during the occurrence of the events. The proof of this offense is established by cross-examining the complainant. Okay, got it. The method of medical evidence is collected and used to establish/prove the fact that the accused was indeed guilty of committing non-consensual intercourse with the alleged victim. Alright, so we have somewhat of an understanding. क्या है ये by the way? Okay, about the author. We need to ये भी समझना ज़रूरी. Guys, ये भी समझना ज़रूरी. Most people cannot do that. Most people cannot sit there and read shit about shit. तो वो वीडियो देखते हैं, वो रील देखते हैं, they make up an thing in their mind. के मनोज्ञा रेड्डी ने लिखा है. I love all the Reddys. Is a student of BBA LLB at ICFIA Law School. She's the kind of person who is hardworking not to achieve dreams but to collide with reality. Oh my god. She's a typical student who likes to keep being positive most of the time. Achieving a good result is her motivation drive. She is excited to improve and correct her mistakes. She took up law studies to achieve a stable career and now thriving to achieve the respect that she deserves from the society and to give the service the society deserves in return. Okay, that was weird. It took forever for a movie like Pink to be made, and just some time after Pink, the Article 375 had to be made, shows male privilege, and people celebrated 375 as a revenge against / answer to Pink. Oh, did they? Okay. मैंने दोनों मूवी नहीं देखी वैसे तो. Alright guys. How to be a good wife? I need to learn this. साधु साधु साधु. मेरे परम कल्याण मित्र गुरु भंते जी जिन्होंने हमें धर्म मार्ग बताएं और धर्म की रास्ता दिखाएं, उन कल्याण मित्र के चरणों में मेरा सादर प्रणाम. पुण्यान उपासक उपासिकाएं, आज आप लोग को सौभाग्य का दिन है, क्योंकि आज जो हम बताने जा रहे हैं, जो मातृका चूज की है, वो विशेष है. हर किसी को मन में प्रश्न होगा कि कैसा पत्नी होना चाहिए, कैसा पति होना चाहिए. अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो संभल कर किस पत्नी से शादी करने जा रहे हैं, कौन असली पत्नी है, सच्ची पत्नी है, वो इस सूत्र सुनने के बाद समझ में आ जाएगा. तथा पति का भी स्वभाव इसमें अंतिम है. मेरा कमेंट पढ़ो ना यार, ऊपर का मैंने पढ़ा नहीं क्या. हाउ डू यू प्रूव इट? आई मीन कंसेंट कोई लिख के थोड़ी लेता देता है, वो कह कर देते हैं ना मोस्टली. हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, उसमें लिखा भी हुआ है एक्चुअली, बहुत बेसिक तरीके से लिखा हुआ है. बट यू गो अबाउट प्रूविंग लाइक यू प्रूव एनी अदर थिंग. कहाँ गया ब्लॉग, हटा दिया क्या मैंने? देन बेसिकली तुम्हारी वो कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टेटमेंट्स और ये सारी चीज़ें दिख रहती हैं. बेसिकली द होल इंटरोगेटरी थिंग, वो ही शेड वाली चीज़ बन सकती है. यस, ट्रू. I think a big reason for increasing grape is watching porn even in Delhi. Grape 2012, one person who was involved said that he was watching porn for many hours.
हो सकता है, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. अरे मुकुल तूने जाकर उसका चैनल देख लिया भाई साहब. मुकुल हैज़ नो चिल. So basically, you go about proving by they check everything. They do medical examination. They check कि कितने consistently तुम्हारी क्या क्या statement रही हैं, क्या क्या तुम्हारा वो है. Then it's up to the courts to basically decide कि most probably कौन guilty है, कौन guilty नहीं है. अरे 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 तेरी भैंस की आँख भाई, क्या हो गया? Dude, you can fucking die like that. तो कितना कमाता है मुकुल? I have watched enough one, and yes, I have craved a teddy. Okay, dude. Dude, you can die like that. भाई साहब, बच्चे क्या करते हैं? अरे क्या हो रहा है ये? ओ तेरी. That's one fucked up thing I think इंडिया में, कि अगर तुम्हें कोई पुलिस वाला मारता है तुम उल्टा मार नहीं सकते. I think I heard that somewhere. इस सबरेडिट में पक्का मेरी वीडियो भी होगी कलेश की. This is what I mean. Most people don't know how to fight. ये क्या चल रहा है? The problem is not laws tilting towards women in dowry rape cases, but the incompetence, lethargy and corruption of police in such cases. हाँ. I would agree to that as well. But are you aware कि हमारी ये सारी बात कहाँ से शुरू हुई? श्वेता से. So it's a little different what we were exactly talking about. Sorry, I missed. I'm very elder to you. अभी इस पुलिस की जगह सिंघम होता तो 2-4 गाड़ियाँ पटला देता. मुकुल मेरे में तो 700-800 व्यूज आते हैं, तेरे में वो भी नहीं आते. Do something with your life then talk. अरे chill guys, chill. Why do you need to fight so much? No, I don't. हाँ तो basically we were discussing about how if two people have sex with the pretense of marriage and later on the guy turns out not to marry her, so the women can basically accuse them of rape, which makes sense because once again, if they were manipulated, if the guy was lying about his promises, then the woman couldn't have consented because she was unaware of some of the things going about it. अरे मुझे एक चीज़ दिखानी थी यार तुम लोगों को, दिखाता हूँ. Do I have my Instagram on? I'll show you guys. Wait. This is very special, guys. Don't underestimate this. I want all of you to see this. Extremely special. All right? You can see?
Everyone sees it, right? सबको दिख रहा है. Very special. Don't underestimate it. Very special. क्या रोनाल्डो और मेसी? कोई शहर नहीं, जड़ा जाट का गैर नहीं, मारे पर का प्यार मिले ना. ये होता है फुटवर्क. This is what footwork is, motherfuckers. अरे मुकुल has no chill. हमारे पर का बैर नहीं, हमारे पर का. Ronaldo and Messi are the footballers with best footwork. Fuck them. कोई शहर नहीं, जड़ा जाट का गैर नहीं, मारे पर का प्यार मिले. Yeah, he has good footwork. Yeah, you gotta give it to him. The guy can dance. Say what you want about him. The guy can dance. The guy can dance. नीलेश भाई तेरे को करना है ये विवेक बिंद्रा का डांस moves when you reach 10k subscribers. Don't worry, I'm never reaching 10k subscribers, bro. नहीं बहुत गलती काम किया. I'll do it if I do. Don't worry. और मैंने कुछ चैट वगैरह मिस करी है. Damn bro, it's not fine rating, is it? Speaker 2200. 2200 is very good, I think. कि नहीं? I think 2200 is quite good. Okay, good. Mugul, Manan, keep laughing, bro. Later you will laugh in your life. Bhai, just those he's trolling you. Trust me, he's trolling you, bro. होने लाइफ होता है. मुगल तो ट्रोल करना बंद नहीं करेगा. नीलेश भाई तेरे को करना है विवेक. I'll do it because I'm never reaching this. मैं बीसी छोड़ दूंगा तेरे चैनल पर and make sure you reach 10k. I have it Magnus with it and सागर भाई. भाई गाना सुना दो कोई. गाने से याद आया जो वो गाना है. हर कोई wannabe सिंगर एक गाना गाता है. तुमको पता है कौन सा गाना है वो? गिटार लेके हर कोई wannabe सिंगर एक गाना गाता है. आंसर दो गैस. हर कोई wannabe सिंगर से मेरा मतलब है जो लोग नया नया सिंगिंग करनी शुरू करेंगे. मे बी दे आर ग्रेट, मे बी दे आर नॉट, बट एवरी सिंगर सिंग्स दिस सॉन्ग गिटार लेके. एवरी गाय. भाई चेस डोज, यू आर लकी गाय ब्रो. आई विश आई इन्वेस्टेड इन चेस व्हेन आई वाज यंग. There are also a lot of other things which goes. Chess is less like most things. Chess is more than just practice, but practice takes you a long way. But guys, कौन सा गाना है जो हर कोई लौंडा गाता है when they're, you know? Everyone make mistakes when they type fast. Bhai, just those, you need to chill, bro. You're being trolled, that's all. ओए विवेक तेरा टेडी बेयर. तेरा टेडी बेयर आ गया. कलेश, ये BW क्या होता है? ब्लैक एंड वाइट पता था मुझे. अ टेडी बेयर गाय एंड द गर्ल नियर नौका विहार गोरखपुर. ओवर गर्ल सेड टेडी बेयर वाज टीजिंग हर. अरे अरे this is another reality in society, because if the teddy bear is a guy, he cannot really hit her, because all these people who are hooting right now will start stomping on him. Total Kalesh happening in chat. Mukul versus Chess Dos. Chill guys, you just need to chill. मेरी टेडी को सिर्फ मैं मार सकता हूँ. Dumb bitch. Stop hitting my teddy. Oh my god. अरे
होली फकिंग शिट, अगर उसके बहुत तेज लगी सर पे, दिस इज बैक ऑफ द हेड, क्योंकि वहाँ पर ईट थी, इफ ही एक्चुअली फेल ऑन द फकिंग ईट, ओ फक, नहीं ही डिडंट फॉल ऑन द ईट, राइट, दैट कैन बी वेरी डेंजरस. हाँ ड्रॉ में बात साढ़े भाई ये वायलेंट कंटेंट मत देख ले, ये यूएफसी नहीं है, चैनल बंद हो जाएगा. सही कह रहा है. What the fuck is going on? People don't know how to fucking fight, guys. Dr. Ekvinder, motivational speaker, there is nothing lucky. You just pick one skill, become good and monetize it. Amit, yo, Hanilesh, Mukul, Vivek sir and 6 others. Hello. Hi. Wait, this is funny as fuck, yaar. हैं? कलेश सिंगर राहत फतेह अली खान and his household workers. अरे भैंस क्या? Still you reached 2200. That means you invested in chess when you were young. हाँ bro मुकुल. But this is this राहत जरूरी था कि हम दोनों. और ये भी इतला हमें मिली है कि राहत फतेह अली खान जो है एक सल्तनत उन्होंने जो बेतिया रोड पे अपनी बना रखी है, वो अक्सर जो है ममनुआ अशिया के इस्तेमाल के बाद अपने मुलाजमों पर वहाँ पर तशद्दुद करते हैं. एक मरतबा अपने ड्राइवर पर भी तशद्दुद कर चुके हैं और इस तरह के वाकयात जो हैं वो राहत फतेह अली खान के उस स्टूडियो में और इनका वो जो फार्म हाउस है वहाँ पे मामूल बन चुका है. और खुद भी मारते हुए तशद्दुद करते हुए मैं तेनू समझावा कि खड़ा कर नीचे गिरे हैं, जिससे इनकी इस वक्त जो हालत है ज़हनी उसका अंदाजा किया जा सकता है. और वैसे ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं पूरी दुनिया में और ओके इसने एक चीज़ बोल दी जैसे इनकी हालत है, उससे आई जस्ट गॉट सैड थैंक्स बिकॉज यू नो ही इज़ प्रॉब्ली मे बी ही इज़ जस्ट एग्रेसिव all the time, but also maybe he's going through some shit that doesn't justify any of this. मैं ये कुछ justify नहीं कर रहा, but हाँ I saw a drunk video once. I don't know if that was real. जो stage performance वाली थी मैंने भी देखी थी. I lost some of the respect for him. अच्छा ये ना देखो ना तुम लोग कह रहे हो क्योंकि वो हो जाएगा. ये लास्ट देख लेते हैं. चलो ये क्या हो रहा है. अच्छा नहीं मुझे कुछ सांड ने और fuck I didn't even read that shit. What the fuck? Fuck off. All right. Chill, Chesdo, still my bro. Trust me. I don't know why I find these things extremely. इतनी तेजी में नहीं बेटा. अंकल लेक्चर देने पहले आ गए. बेटा इतनी तेजी में नहीं बेटा. यल्ला नीलेश को चेस डोज और मुकुल की लड़ाई की लड़ाई देख के लग रहा है एक माँ को अपने 2 बच्चों को अच्छा ओके हाँ मैं गांधी हूँ और ये नेहरू और वो हैं पटेल हैं.
मीटअप करवा दो, फाइट भी देख लेंगे। तुम्हें पता है एक चैनल है यूट्यूब पे, लिविंग इन बबल। एक चैनल है यूट्यूब पे, क्या नाम था उसका, स्ट्रीट बीफ्स। हाँ, so this is like organized fighting, but I don't know how organized this is. भाई साहब, मतलब these guys know how to fight. मतलब they are not professional fighters, but they know how to fight at least, right? I love this channel. Out on Instagram at thunderdragon.mma. Are you leaving? Let's get it. Parker Rogers fighting out of Warren, Arkansas. Let's go. इतनी जल्दी? All right, that was, nice check. Fuck. All right. स्ट्रीट बीफ्स में चले जाओ तुम दोनों, चेस्ट डोज और मुक्कल। अमित भाई इनकी लड़ाई रुको, वरना नीलेश का एक बार कम हो जाएगा। अमित चल मार रहा, अमित खुश है, अमित को खुश रहने दो यार। I sadly like this guy. Let's see, maybe something we are missing. चालू हो गया। सो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है दीपीजे के एक और नई वीडियो में, जहां मैं एक और पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर आपके साथ बात करना चाहूँगा कि एक इंस्टाग्राम अकाउंट को मैं आपको सामने दिखाना चाहूँगा, जिसको आई थिंक उनका पेज मेरे एल्गोरिथम को एक पॉजिटिव वे में इफेक्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। और बंदा काफ़ी फैसिनेटिंग। मैं 2024 सितंबर में 24 साल का हो जाऊंगा एंड बहुत दुनिया मैंने नहीं देखी हुई है, और जब इस तरीके का कंटेंट देखने को मिलता है और जब रियलाइज होता है कि भाई यार दुनिया में क्या क्या चल रहा है। खैर अभी मैं बताता हूँ मैं किस अकाउंट की बात कर रहा हूँ। वो है बेटर कॉल अमीश अग्रवाल। इनके बायो में लिखा हुआ है बेटर कॉल अमीश, दैट्स नाइस। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इन्हें देख के पता चलता है कि हाँ ये डिवोर्स में ऐसा कुछ स्पेशलिटी रखते हैं एंड मर्दों की तरफ मेनली इनका कंटेंट झुका रहता है, जो कि ऑलराइट, कम ऑन, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. I think we should know about this information as well. Beer Biceps की वीडियो देखोगे on how to impress girls. That is good content of bullshit. हमने देखी थी वो, पता है, in the Not Knowing podcast. हमने देखी थी Beer Biceps की वीडियो. अरे क्लिप्स वाला चैनल है क्या? कहाँ है? Where the fuck is it? Okay, maybe the channel is not up anymore. I don't know. I honestly have no idea. Do we have that channel? I don't know. मुझे पूछना पड़ेगा सिद्धू से. And I don't. कैसे चेक करते हैं? कम्युनिटी में तो नहीं है होगा. Whatever. Alright. देखी थी वो वाली वीडियो बट. I don't know. Cannot find it right now. Mukul, why am I talking to you who is hiding his age? Fake ID. अरे नंबर 1 फ्लर्टिंग टेक्निक टाइटल है उसमें, वो एक पुश एंड पुल टेक्निक बताता है. हाँ मुझे पता है, मैंने देखी वीडियो. विच इज़ ट्रू बाय द वे, दैट इज़ अ रियल टेक्निक बाय द पुश एंड पुल टेक्निक. रियल आईडी से यार. अरे वो एक आई थिंक वो दिल से भी वो बात इनके जहन से निकल पाती है. वो नजर आता है इनके कंटेंट में कि वो क्या कहते हैं, वो प्रॉपर जस्टिस आई डोंट नो, लेकिन हाँ वो सिंपैथी नहीं दिख पाती मर्दों को लेकर जब लॉ के अंदर बात आती है. खैर इनके कंटेंट के ऊपर देखें तो मैं अभी ऐसी कुछ प्ले करता हूँ. एज नहीं बताई तो फेक आईडी. भाई मैं तुम दोनों के कमेंट्स रिपोर्ट मार के हाइड करवा दूंगा. दूसरी कुछ बात करो यार. सही में गैस चल लो यार. नाउ ऑलराइट गैस.
अच्छी बात करते हैं. ट्रू. अमित यार, अमित का मूड किल मत करो. सो आगे चर्चा करेंगे इसके ऊपर. मैट्रिमोनियल लिटिगेशन में एक चीज जो मुझे बहुत चुभती है, जो हस्बैंड्स के खिलाफ बहुत अनसिम्पैथेटिक हो जाते हैं जजेस, जब वो बोलते हैं कि आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आप कैसे उनको मेंटेनेंस डिनाई कर सकते हो? आप कैसे कहते हो कि मैं भरण पोषण के लिए बीवी को, बच्चे के लिए पैसे नहीं दूंगा? उसमें So first of all, we need to understand this. This is this guy's stick, by the way, stick. He does talk about males more, in favor of males more. I'm not saying कि वो झूठ बोलता है. I'm not saying any of that. मुकुल चल यार, come on. Let's move. हस्बैंड की तरफ से यही जवाब आता है कि जज साहब, शादी में जब साथ में रह रहे थे तब तो जो भी हुआ सो हुआ, मेरे साथ अत्याचार. सेपरेट होने के बाद बीवी मेरे ऊपर फॉल्स केस फाइल कर रही है, मेरे और मेरे पूरे खानदान को, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन को पुलिस स्टेशन और कोर्टों के चक्कर कटवा रही है, और आप उसी लेडी को कह रहे हो आप पैसे दो ताकि वो और वकीलों को फीस दे सके, ताकि और वकील मेरे को तंग कर सके. इसमें क्या इंसाफ? पर ये चीज जजेस नहीं कंसिडर करते. वो बोलते हैं आपकी बीवी है तो आपको तो ड्यूटी है, मेंटेनेंस तो देनी ही पड़ेगी. इसमें क्या इंसाफ और इसमें क्या ड्यूटी? ये इस तरीके का I highly doubt कि जजेस ऐसे कहो नो करना ही पड़ेगा. I highly doubt that. कंटेंट बड़ा फैसिनेटिंग होता है. आई मीन यार, मैं अभी ऐसे देख रहा हूँ कि भाई यार क्या चल रहा है हिसाब किताब, एंड माय कमेंट्स भी उस हिसाब से फैसिनेटिंग लगते हैं. आई मीन एक मैं पढ़ रहा हूँ फॉर ऑल द ब्लेम वुमेन गेट फॉर फाइलिंग फॉल्स केसेस ऑन देयर हस्बैंड. आई मीन बहुत आता है, मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, मतलब आई थिंक सी जस्टिफाइंग, आई डोंट नो. लेकिन एक बंदे ने नीचे लिखा हुआ है तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई, वो लॉयर है, ठीक है. एट यार एक लिखा हुआ है, एक मैं हूँ, हस्बैंड को ज्वेलरी और घर जो भी था सब दे दिया उनके बुरे टाइम पे. ऐसे ज़्यादातर होता है, बहुत ज़्यादातर होता है. मैंने मम्मी को भी देखा हुआ है. एक पहला कमेंट है कि सर एज एन इंडियन सिटीजन कैन वी डू एनीथिंग टू चेंज सच लॉज? आई थिंक टू चेंज दीज लॉज, उसके लिए पहले लोगों के सामने ये अगर ये समस्या है तो लोगों के सामने आना जरूरी है. मैं बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर सकता जो लोग इन प्रॉब्लम से जूझ But see, I highly doubt वो ऐसा होता कि नहीं ऐसा है तो फिर तो करना ही पड़ेगा. रहे हैं, एंड मेरी पूरी भावना उनके साथ जाती है, पूरी सिंपैथी. लेकिन या आगे और किसी के साथ ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो, कोई नहीं चाहता ना कि मतलब कैसे पंच में कोई फंस जाए. लेकिन या बंदे का कंटेंट काफी आई ओपनिंग भी होता है और साथ ही साथ डराने वाला भी होता है कि भाई यार ये क्या हो रहा है. एंड खैर अपना इनके नेक्स्ट वीडियो को देखे तो आई मीन सभी उस तरीके के देखे ना, डोमेस्टिक वायलेंस, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, एक्चुअल एलिमनी डिमांड अमाउंट, एक्विजिशन इकोनॉमी, मेंटेनेंस आफ्टर अब फिर ये guys, both of you chill now, come on. being laid off, stepping into the shoes of enemy, misuse of women centric laws. I mean तुम कंटेंट समझ ही सकते हो कि क्या बात चल रही है. एंड कहीं ना कहीं होता है ना कि प्रॉब्लम झेल जाता है वो अपना, मैं तो कैसे सही वर्ड में फिट करूँ, क्योंकि अगर स्क्रिप्ट में लिख के प्रेजेंट किया होता ना तो हाँ थोड़ा सा मीठा बोल सकता था, लेकिन यार ऐसे काफ़ी रॉ निकलता है दिल से. लेकिन हाँ काफ़ी बुरा लगता है हाँ कि अभी कुछ साल ही. I think problem in public on social media becomes the jury and declares verdict on accused even before the court. They don't listen to both of the sides and always favor the women. Not always. Shwetab के case में it seems like he's not listening to both sides and favoring the men. I think what you are saying is true generally, and I think कुछ हद तक होना भी चाहिए. Let's chill and kiss. Yes guys, let's chill and kiss. I think कुछ हद तक होना भी चाहिए because जो capability है वो मेल्स के ऊपर पे ज़्यादा है to harm the other gender. Women पे भी है emotionally psychology, yes, but again that is not something exclusive to women. Usually men are more capable of harming the other gender. So that's why society is a little tilted towards women. And I think it's fair enough. It's fair. अपनी अर्ली 20s में हूँ मैं. एंड बाय द वे वो जो टिल्टेड की बात हो रही है वो उसमें हो रही है, जैसे वो टेडी बेयर को मार रही थी, अगर वो टेडी बेयर उल्टा हाथ उठाया था तो उसको जान से ही मार देते. जान से तो नहीं मार देते, आई एम स्पीकिंग थोड़ा सा वैसे. लेकिन ऑब्वियसली वी हैव पेट्रियार्की वाली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा जगहों पे हमारे यहाँ. आई यूज्ड टू वॉच बियर बाइसेप्स वीडियो फॉर आउटफिट टिप्स एंड व्हेन आई वाज यंगर, बट देन आई वॉच्ड his vlogs in which he broke character and I realized this person is scarcely very different and act manufactured. Okay, Mukul, by the way, I'm straight. हाँ वैसे मत समझना. Yeah, but this majority of listening to both sides among masses have developed in last few years, where when there were cases of fake cases. हो सकता है, but that's not the court is, but that's why we have courts, right? और ऐसी सारी चीज़ देखने को मिल रही है, जो कि ये बहुत अच्छी बात है यार कि चलो क्या मतलब बेटर कॉल अमीश जैसे लॉयर्स हमें ऐसे सच के बारे में बता रहे हैं, एंड इनकी वजह से भी ऐसे और भी लॉयर्स ऐसे कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत इशू ये है यार, हम लोगों को ना बहुत सिंपल वो चीज़ होते हैं जो यू गाइस मस्ट रिमेंबर. कल हम जब वो देख रहे थे, क्या नाम है उसका, द मिडलिस्ट गर्ल, व्हाट्स हर नेम, राइट, वी वर टॉकिंग अबाउट टाइमलाइंस. रिमेंबर गाइस हर नेम आई कैन नॉट रिमेंबर राइट नाउ. जो मेंटलिस्ट लड़की है, लड़की मंगवाओ आज मूड है तेरी भैंस की. यहाँ तो यू सी these are different points in time, right guys? We understand that. Hey yaar, fuck off, I can never get it right. हाँ भाई कौन थी वो उस दिन, खुशबू. Alright guys, chill, come on, we're not gonna name names.
or name girls and you know, भाई साहब धीरे धीरे तुम्हारी टॉक्सिसिटी निकल के आ रही है अंदर की. Alright. सोहानी शाह, yes, सोहानी शाह, डैनी डैनियल्स बोला हुआ को. Alright. So क्या बोला था सोहानी शाह ने? कोई एक इवेंट हुआ जिसमें एक बंदे ने एक इवेंट हुआ यहाँ पर और उस बंदे को सोहानी शाह ने पानी दिया. पानी नॉर्मल पानी था, लेकिन इस टाइमलाइन में कहीं आके उसने बताया कि आपने मुझे ठीक कर दिया. द रियलिटी इज़ उसके बाद उसने ये सारी चीज़ें करी, बट जो क्रेडिट था, क्रेडिट गोज़ टू दिस इंसाइटिंग इंसिडेंट्स. हो सकता है उससे पहले भी उसने चीज़ें करी हों अलग अलग ठीक होने के लिए. वाई? बिकॉज ऑल ऑफ दिस मेडिकल प्रोसीजर और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, दिस इज़ एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एंड दिस बिकम्स द सिंपलेस्ट ऑफ आंसर. तो इन चीज़ों में भी दिस इज़ द थिंग, वी लुक फॉर द सिंपलेस्ट ऑफ आंसर्स. And that's the issue. बहुत हद तक आगे चल के पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगे, क्योंकि मैं we want the world to be black and white. तो कोई भी 100% कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, और मैं आई थिंक मैं उस पोजीशन पे नहीं हूं कि मैं किसी के साथ लड़ सकता हूं. लेकिन हाँ, अपने जो भी दो विचार हैं, दो ब्रेन सेल जो भी बचे हुए हैं मेरे दिमाग में, अगर उनके ऊपर अपना ओपिनियन जाहिर करना रहे तो काफ़ी निराशाजनक होता है. जो ये बातें बता रहे होते हैं कि किसको क्या देखने को मिला, किसको क्या मिला, किसको किस तरीके का जस्टिस दिखा, अब काफ़ी दिल बैठा देता है, काफ़ी आपका विश्वास भी उठा देता है. एंड ये ना ये अगली ट्रुथ है, और आपका दिल अंदर से मार देते हैं कि हाँ यार, मतलब यही सब चल रहा है तो फिर फ़ायदा ही क्या. लेकिन इन्हीं सारी बातों के बीच में उम्मीद भी तो नहीं ना छोड़नी चाहिए इंसान को, क्योंकि प्यार करना तो बहुत ज़रूरी है. एंड इस बंदे की ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी. इसने आई थिंक किसी रील में बताया हुआ था कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है मैट्रिमनी वाले हिसाब में, तो प्लीज़ लॉयर के पास मत जाइए, अपने थेरेपिस्ट के पास जाइए, रिश्तेदार के पास जाइए, या किसी के पास भी जाइए, लेकिन लॉयर के पास नहीं, क्योंकि लॉयर वो अपने हिसाब से सोचेगा और फिर चीज़ें वहाँ से बुरे वे में ही एस्केलेट हो जाती हैं. ये काफ़ी अच्छी बात जानने को मिली. वैसे भी लॉयर का काम क्या है? How do you think like this? Any book recommendation? No, it's just when you are wrong often enough, you understand कि हाँ, you have the habit of being wrong. I have been wrong so many times on so many things. So it's just like try not to jump on conclusion too fast. That's it. Take your time. रुद्राक्ष के व्यूज़ नहीं आते यार अब. It's really sad. Don't you think he should quit now? He's doing a lot of things. He's not only doing YouTube, and he's barely doing YouTube. He's much more active on Instagram and this and that. एक सेकंड, तुम मुझसे पूछ रहा है? यार फक्ड अप सिचुएशन है दुनिया की. एंड इसी के साथ आई थिंक जब रात के 11, 10, 12 बजे ऐसे स्क्रॉल कर रहा होता हूँ मैं, एक के बाद एक ऐसे रील देखने, एक बार रिकमेंड हो गया और लाइक मैंने कर दिया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसा दिखता चला जाता है, और फिर तो आपका दिल ऐसे बैठते और बैठ जाता है कि भाई यार क्या हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, आई थिंक बीच में मैंने ऐसा कुछ सुना हुआ था, कोई ऐसा लॉ था या फिर ऐसी कोई चीज़ थी जो हाल ही में इंप्लीमेंट हुई है, कोई ऐसा सेक्शन कि भाई आई थिंक बस बोल दिया जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते, फिर मतलब आप फिर खत्म भाई आपका हिसाब. और वो काफ़ी डरा देने वाला है, टू बी ऑनेस्ट काफ़ी डरा देने वाला है. एक लॉयर ने तो ऐसे ही बताया था कि भाई यार अगर कोई आपसे मिला भी नहीं है, ठीक है, और उसने आपको देखा भी नहीं है, आपसे बात भी नहीं हुई है, तो भी आप बहुत ही बुरी से बुरी फकअप वाली सिचुएशन में फंस सकते हो. लेकिन यार अगर ये सारी चीज़ें आई हैं, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स, अब मैं चाहता क्या हूँ कि अगर ऐसी सारी नहीं भाई, मैंने तेरा कमेंट ब्लॉक नहीं करा. आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा. आई हैव नो आइडिया. प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगे तो प्लीज़ उनके सॉल्यूशंस भी हमें जानने को मिले, क्या क्या प्रिकॉशंस इंसान देख सकता है. एंड आई थिंक एक लड़का एक मंथ तक बन पाता है जब वो रियलाइज करता है कि आई वुड लाइक टू सी हिज कमेंट्स, क्योंकि आई थिंक दिस गाय हैज़ एन इंटरेस्टिंग टेक. हाय प्रियांशु, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स. Alright. Thank you so much for standing for man. I really appreciate that PJ is going out of his comfort zone and making this type of content. Experiment on things, and I wanna watch this shit. Good luck, Bhaijan. I blocked. अच्छी बातें कर आते रहेंगे कमेंट्स. नहीं, किसी ने ब्लॉक नहीं करा, चल मार. Check out Better Call Amish last community post. It's very interesting. साढ़े तू क्या वासी ले रहा है? स्ट्रीम कर रहा हूँ मैं, सो रहा. Can you hear him? Hi, this is Amit. Hello sir, how are you? Last community post, there it is. Few years ago, a very similar stunt was used. अरे तेरी पैंस की. Sharing my story from a night out to seeking justice. मैं next कैसे करूँ? ये 1 of 2 लिखा है. I cannot do next, right? No, I cannot. Let's read it. A few high school girls banded together on social media. One of them claimed that 2 years prior, when they were both 15 years old, this boy attempted to rape her right outside Grape. One of them claimed 2 years prior, when they were both 15 years old, this boy attempted to grape her right outside her building in a posh, packed, gated society in Gurugram.
She offered no proof, no explanation for the 2 years delay. In reporting this, she never filed any police complaint, but she demanded social justice. The mob came for him. The poor underage boy, no trial, no proof, paid with his life. In the fleeting time that passes by within an hour of the initial post by the girl, he was called, texted, and threatened by hundreds. We will hurt you. We will hurt your family. The boy, no trial, no proof, was pushed by this mob, very much akin to the comments I see on the post. Manav Singh committed suicide with 1 hour of her Instagram post. ऊपर लिंक है Instagram post का. Okay. Amit Survanshi, why blog? अरे bro, just chill. Nobody has blocked you. लगी ना? Alright, he got fucking hurt probably. Later, it came to light that the girl who cried grape a few hours prior to making her post on social media created a Snapchat group where the several girls were added and immaculate plan was discussed to go viral on social media. A fantastic plan. She will post, everyone must share. Let's teach Manav a lesson. The real reason, an argument Manav had over recovering the concert ticket amount with one of the friends of the complainant. Sorry bro, you were fighting, so I did. It has been 4 years. Not one of the perpetrators has been arrested. The boy's father, me and my team have gone to courts, police stations over 200 times with the best of our efforts, and the most we have been able to manage is that the charge sheet was filed against the main false accuser and her friend. We await the trial and still beg police to investigate further properly. If not for the painful efforts of Mr. Manoj Manav's father, the matter would have been closed by the police in 3 months. Even in the case, all I see is an anonymous post. Is it even the same girl or maybe even her accomplice who wants people to respect her privacy, offer no proof, yet wants everyone to believe that the man she accuses is guilty beyond doubt? All right. बाय द वे, आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ख़त्म नहीं हुई. 2.5 घंटे हो गए स्ट्रीम को. मेरी पहले 5 मिनट में हो गई थी भाई, उसके बाद तो मैं बस चल ही रहा हूँ. इवन इन केस she should have filed her police complaint. Let the police investigate. Not that there will be any fear, but this one thing to drag someone into a false case lasting the next 10 years, it's completely another to run a media trial where you are given no voice, but the public demands death by lynching. All the people virtue signaling in the comment section of this post should remember this could happen to any of us. Let's not jump to conclusions. Lest we see another man. At least till now innocent until proven guilty, jumps to his death. True. I don't know this man. I don't know the girl. I just know that this is only a publicity stunt. Amit, I was not fighting, but was educating that kid. Amit bhai. ये फिर शुरू होना है ये. Hey guys, come on, seriously, this is getting boring now more than anything. All right. Here's something interesting. I find interesting. जिस तरीके से किसी ने पोस्ट डाला और काफ़ी सारे लोगों ने अंधाधुन उस पर रिएक्ट कर दिया, उसी सेम तरीके से अब मुझे प्रॉपर रील नहीं पता, लॉयर का नाम क्या है, बेटर कॉल व्हाट, उसी तरीके से लॉयर अमीश ने कुछ रील्स डाली और काफ़ी लोगों ने बहुत अचानक से उस पर रिएक्ट कर दिया. अब नो रील्स, देखो रील्स शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होता है. ही इज़ नॉट गोना एक्सप्लेन एवरीथिंग इन अ रील. लेकिन अगर उस रील को उठा के मैं एक पूरी 20 मिनट की वीडियो बनाता हूँ हाउ मेन आर बीइंग अटैक्ड विदाउट डूइंग माई ओन रिसर्च, आई थिंक दैट्स इररिस्पॉन्सिबल ऑफ मी. तो आई थिंक द फिलोसफी इज द सेम. विदाउट रियली अंडरस्टैंडिंग समथिंग यू जस्ट गो एंड डू सम शिटी थिंग. उसके बाद तुमने चीज़ किस लेवल पे करी, किस लेवल पे नहीं करी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. एंड ऑल्सो अगेन दिस इज ऑल्सो अनदर हॉरिबल थिंग. मुकुल भाई, उसने नाम किसी का नहीं लिया. हिंदी में समराइज कर दो नीलेश. अब मैंने भी नहीं लिया नाम, तो नाइस नॉइस. तो alright. Anyways, क्या था मैं, तो भाई मेरे ख्याल से यही हुआ, अनलेस आई एम रॉन्ग, कि किसी कुछ लड़कियों ने एक ग्रुप बना के एक लड़के का नाम डाल दिया कि ही ट्राइड टू ग्रेप हर और डिड ग्रेप हर, एंड बहुत सारे लोगों ने उस पर उसको गालियाँ दी, उसको थ्रेट्स दिए और उस लड़के ने सुसाइड कर ली. सो दैट्स व्हाट हैपेंड.
shit happens. It's horrible. It's horrible shit happens. Horrible shit happens in this world. We're living in a horrible world. We need to understand that. मैं इतना हरामी हूँ कि कल भी मुकुल और जस्टोर को याद दिलाऊंगा कि लड़ाई कर अधूरी रह गई. So, अच्छा ये क्या है वैसे? अच्छा ये जो ऊपर का वो था, तूने मुझे बोला था, राइट? Sharing my story, punish my rapist. All right. I'm a 21. Oh, right, guys. All right. See, now this is another issue. And now, we need. Love you, bhai. Let's spread. So we need to understand this. दोनों sides में horrible चीजें हो सकती हैं, right? Men can go too far. Women can go too far. This is true with everything. जहाँ पर one or the other है. Feminism can go too far. Patriarchy can go too far. Right? We understand this, right, guys? Sharing my story from a night out. See, King Justy. Hi, I'm genuinely sorry for whatever happened tonight. Didn't mean to do what happened. The situation got heated up and escalated, and I'm really very sorry. I hope we can get over this and leave behind us. I am aging very apologetic. I'm again very apologetic and sorry. All right. So there's a screenshot. I've been watching your vlog since the very beginning, but you never anything about your love life. There's nothing much interesting about my love life, brother. I'm a 21-year-old girl from Mumbai, and this is my story. I decided to hang out with a guy, and I had been talking to on Instagram, and we had a few mutual acquaintances. What I thought would be a fun night out and turned out into the most traumatic experience of my life. Okay, यहाँ नाम दे रखा है किसी का. And I went out for drinks and partying in town. Starting at a place A, after meeting a couple of his friends, we left for this other place. After some tequila shots, I became intoxicated, feeling anxious and alone at the party. He insisted I drink more, and I had a blackout episode, not recalling what happened next. I suspect I may have been roofied. I woke up to him graping me, and despite my efforts, all right, and despite my कहाँ गया? And a blackout, not recalling, and where am I? What happened to the next suspect? I have been roofied, woke up to him graping me, and despite my efforts to stop him, he continued to, and even slapped me 2 or 3 times with intense rage, leaving me scared and intimidated. The place turned out to be his friends, and his friend intervened to protect him. He tried to get me out before I could call for help, even threatening me in their presence. After leaving, he attempted to flee the scene. I called my cousin to pick me up, bruised and hurt. I couldn't bring myself to tell my parents about that night. When my family found out, they were stunned. I filed an FIR against him later that week. His morning apology means nothing to me. Of course it shouldn't. And he has absconded. I don't even know what that means, because he knows what he has done. 12 days have passed and he hasn't been arrested. He applied for anticipatory bail. Alright, मैंने कुछ chats वगैरह मिस करी हैं probably. काफ़ी सारी कर दी. Vivek sir, Amish commented on this Insta post and just read the replies on his comment. Alright, will do. Vivek sir, मैं भी किसी ज़माने में ऐसा था, लड़ाई करवाता था. फिर मैंने संदीप महेश्वरी की वीडियो देखी. शायद आप भी जल्दी सुधर जाओगे, क्योंकि आजकल आप भी देखना लगे हो संदीप महेश्वरी भाई को. कोर्स के बिना लड़ाई कर रहे हैं. 10-day chat reading program. Amish commented on this Insta post. Just read the replies. अभी देखते हैं. विवेक भाई, I don't fight with this keyword kids. अबे यार, get over me. Love you, bro. Alright. The accused has been booked under IPC section 376, punishment of rape 323, punishment of voluntary causing hurt. I seek justice and urge the other girls to be more wary of who they talk to and go out with. Yes, you should. If you have any links, resources, advice, connections, NGOs that can help me, can help to me, drop a DM. This would be very helpful. हाँ, तो कहाँ है उनका कमेंट लॉयर साहब का? Okay, एक सेकंड, कमेंट यहाँ से दिखते हैं ना. Oh, fuck off. I'll have to do this. एक सेकंड, guys. I have Instagram opened on my Microsoft Edge. Now I can see the comments, right? I hope so. अब क्यों नहीं दिख रहे?
आई डोंट फाइट लेट्स स्प्रेड्स कोरोना. साला तुम चैनल बैन करवाओगे और कुछ नहीं. ओ भाई साहब ये कौन है? और जा पार्टी कर. द डूड वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बट व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, huh? That too, going in a club with alcohol and shit when you are just 21. You went into Tiger's cage, girl, knowing damn well of repercussions. Better to have the full story from both sides. If you weren't roofied and were just intoxicated, good luck. भाई साहब ये क्या है? Let's have an orgy. Wait, what the fuck? और जा पार्टी कर. What the fuck? Mumbai Police. We are grateful you duly reported it and we assure you the investigation should be rightfully done and to ensure justice. इससे ज़्यादा क्या चाहिए? Ma'am, we had a conversation with the concerned police station and we have been updated that they are in touch with you and proceedings are going on as per the legal provisions. We hope you are satisfied and with the course of action and we have requested you to keep on touch with the investigation officer. You will definitely be provided with all the support and details. अच्छा वैसे उसने वहाँ डाला था ना कुछ ब्रेव पे ये रहा क्या नाम है लॉयर का. हाँ यहाँ पर. सो वेट व्हाट डिड द लॉयर से? फिर से किसी ने रिपोर्ट कर दिया मेरा मुकुल. अरे नहीं करा ब्रो, आ रहा है मुझे. लॉयर साहब का कमेंट पर रिप्लाईज पढ़ो. लॉयर साहब ने सारे कम्युनिटी पोस्ट कमेंट किया है इंस्टा पोस्ट पर. बट एक सेकंड, लॉयर साहब की एक बात पढ़ने दो मुझे. डोंट फाइट लेट्स स्प्रेड. ओके ये तो बढ़िया था. द रियल रीजन एन आर्ग्यूमेंट माना है और ओके none of these perpetrators has been arrested. The boy father waiting there. If not painful efforts of Manoj and even in this case, alright, I want to read this again. Even in this case, all I see is anonymous post. Is it even the same girl or maybe even her accomplice who wants people to respect her privacy, offers no proof yet wants to believe पहली बात तो in this case, no, this is a very different case. I'm so sorry. Like he's trying to portray it as if it's very similar. No, उसने FIR वगैरह करा रखी है और प्रोसीडिंग्स चल रही हैं पूरी केस की. इट्स वेरी डिफरेंट. वो ऐसे अनोनिमसली कोई भी रैंडम पोस्ट नहीं कर दिया उसने किसी के बारे में. पूरी FIR चल रही है, पूरे बहुत कुछ चल रहा है उस बारे में ऑलरेडी. Right, so this is not, she should have filed her police complaint and let the police investigate. She did. She fucking did. What are you talking about? Not that there will be any fear, but in this, but it's one thing to drag someone into false case lasting the next 10 years. It's completely another thing to run a media trial where you are given no voice, but the public demands death by lynching. No, this is horrible. भाई it is not, she did file a police case. वो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है she filed a police case. What are you talking about? Social media appeals to be null and void in country. Anyone has massacred as anyone. Anyone can massacre as anyone. लॉयर साहब को बस अपना एक साइड मार्केट बनाना है. लॉ टिल्टेड है ट्रू, बट लॉयर साहब तो दूसरी साइड दिखती नहीं. दिस इज़ व्हाट इट सीम्स लाइक एक्चुअली. दिस इज़ व्हाट इट सीम्स लाइक. Sir, once you are entangled with the IPS and judicial system, only God can save you. Sir, please join Shaitab Gangwar for fighting Indian women's rights. All right. That was just funny. क्या हम कुछ ऐसे राइट्स की बात करें जो नहीं है हमारे पास पहले तो. Sir, once you are entangled, अच्छा ये तो बढ़िया था. Lawmakers need to understand that there is need for refinement in laws with changing technology and misuse. Kuchi and Ashwaya, they both have moved to foreign, but what they do there, they become some kind of plague all over there. Yeah, I don't think so. No, not that I know of. If they bring uniform laws to, it should include some laws for both gender as well, exclude any female privileges or male privileges which don't exist in law. Did you know Shwetab and Amish actually have a video together? Sir, Shwetab better call Amish on Sarabjit case. I'm now less interested जब मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही है ना. Like this guy is like उसने लिंक डाला है. इसने बोला even in this case all I see is the anonymous post. She should have filed her police complaint and let the police investigate. She has done that. What are you talking about? In the link which you have provided.
एंड उसके बाद भी नॉट दैट देयर विल बी एनी फेयर. आपका यूट्यूब एड्स ऑन हुआ? नहीं, मेरा यूट्यूब एड्स ऑन है. नॉट दैट, उसके बाद भी अगर वो करते भी, नॉट दैट देयर विल बी एनी फेयर. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? हाउ? I mean, Hi, this is Amish Agarwal. I'm an advocate. I just stepped out of Noida courts after arguing an application under Section 156, Clause 3 of the Criminal Procedure. all right, I'm kind of done with this actually. मुकुल तो फिर शुरू हो गया. Anyways, man, this is just stupid. क्या नाम है? बेटर कॉल अमीश. Cannot see it, bro. See, I will be less critical of Shwetab क्योंकि Shwetab is ultimately a YouTuber, ठीक है? And I don't expect a lot from YouTubers. This guy is a legit lawyer. The sad thing is, and man, is it really that difficult to understand इस बंदे के this is the types of cases he fights? Off topic, but Shwetab is not a good listener or and derogatorily shuts down people just to show dominance. He did this to Vedant in Raw and Real. Felt very bad for Vedant. I like Vedant. मैंने Raw and Real कभी देखा नहीं. I don't know. See, that's again one instance. लेकिन but I don't expect much from YouTubers anyways, guys. अच्छा, repeatedly did this. All right. But I don't expect much from YouTubers anyways. But मेरे ख्याल से एक बार ऐसा, I think that's how he became friends with Prakhar. I think Prakhar criticized Shwetab, and Shwetab was nice with his response to Prakhar, and you know, he even admitted some. I think ऐसा कुछ हुआ था. I'm not sure. I could be completely wrong. Okay, Mukul also agrees. All right. Maybe I'm wrong. The sad thing is वो जो lawyer है, like he fights these kinds of cases, right? For men, and his business is gonna clearly boom from this as well. Is it really difficult to understand those intentions as well? भाई मैं केस लड़ता हूँ आदमियों के लिए, मेंस राइट्स के लिए, एंड माई होल सोशल मीडिया इज फिल्ड विद के आदमियों के साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं. डूड, ऑफ कोर्स आई एम प्रॉफिटिंग ऑफ इट. +1 भाई, दो Shwetab is a good starting Shwetab is a good starting point for those who get influenced who get influenced by celebs, etc. But only a starting point in an intellectual journey. हाँ, intellectual था वहाँ पर. Shwetab kissed. Wait, what? Mukul, why are you so jealous about USD? Everyone earning except you. Guys, come on, yaar. Seriously, are you really? I still think Mukul is somewhat trolling, but dude, why are you trolling that much? अगर उस बंदे को नहीं हो रहा तो, and why are you so much hurt? Just dose, chill. The best way to the best way to deal with rude people, निकल. Anyways, I'm sort of done with it. 10-day chat reading. All right. खुद बन ले मुकुल, वैसे भी नल्ला है तो तेरी नौकरी लगा दूंगा मैं. 10-day चैट कोर्स बनाऊं तेरे लिए. All right. I just find that weird. Better call Amish. Yeah? If we चलो चलेंगे. इस बहुत देर हो गई, 3 घंटे हो गए आज. हैं घनी देर आएगी.
क्या कोई ऐसी चीज़ है जो इम्पोर्टेंट हो इससे रिलेटेड जो मैंने देखी ना हो, जो तुम्हें पता हो? बिल्कुल होप हो रहे हैं दो करना ये लेट्स फक पर आई वोंट मैरी यू आफ्टरवर्ड्स बिकॉज़ आई डोंट एक्ट हम्बल। अपनी ओएफ अर्निंग बता दो उसे यूएसडी में। How can a husband negotiate a lower settlement amount when he has to pay alimony to his wife? After having represented dozens and dozens of husbands, I see that a husband usually finds himself without any leverage on his side when negotiating a settlement amount. The reason why is because the wife has many things that she can do against the husband and his relatives. She can file various criminal cases, she can seek maintenance of all sorts, she can seek residence orders in the house of the husband, and many more things that the wife can do against the husband. However, the husband finds himself with just the ability to file either a divorce case or a restitution of conjugal rights case, which in any case does not make the wife or the wife's family feel that there is substantial damage that can happen to the wife or her family, because of which they do not really feel any OF से उसका मतलब था ओनली फैंस। need ये तो मुझे ही पता है। to back down from the cases that are filed by them against the husband and his family members. And because of this, whenever the parties do come to talk about settlement, to talk about a final sum which can be paid by the husband to the wife to effectively put an end to all of the matrimonial litigation going on in all courts of law and sometimes before the police as well, the husband usually finds that he is not able to really negotiate on the amount that has been quoted by the wife and the family members. If he has the capacity to pay, the wife knows that there is sufficient funds available with the husband. In all probability, just to avoid all of these cases, he must concede. However, I'm fucking bored. Do you think in a relationship and because of their breakup they left working? I know they were not in a relationship. मैं भाई उनके साथ था मैं। That's not what happened. Lower middle class में हूँ भाई। Alright guys. Alright, I'll fuck off now. मेरे बहुत देर से वॉशरूम जाना है, मैं जा नहीं रहा because you know I didn't quite want to end the stream. I think we have covered some good ground. I think we have covered consent. I think we have covered the burden of proof in rape cases, which apart from few exceptions, usually उसी पे होता है जो इल्जाम लगाता है. And do you think Amish's content is low-key depressive for men? यार इट्स नॉट अमीशियस कंटेंट. इट्स होता क्या है, इट्स अ गेटवे. इट्स अ गेटवे. चाहे तुम किसी अभी जैसे जो श्वेताब की जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं, वाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस मच, जो श्वेताब की लेटेस्ट वीडियोज़ हैं, वंस अगेन आई वुड स्टेट दैट मैंने कोई ढंग से रिसर्च नहीं करी है, राइट. एक बार चैनल देख लो ब्रो. सुसु करने का को ऑर्गेज़म नहीं कहते रिलेज भाई, चले जाओ वॉशरूम. कोई नहीं अभी चले जाऊँगा थोड़ी देर में. Here's the issue. I don't even need this actually. तो जो वंस अगेन CTV और एक बार चैनल देख लो ब्रो. अभी देखता हूँ ब्रो, जस्ट दोस्तों में तुमने. द पॉइंट इज तुमने लेट्स से किसी ने कोई वीडियो देखी हो श्वेताब वाली, ठीक है. नाउ आई कैन इमेजिन देयर इज़ अ केस कि श्वेताब ने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी थी बिहाइंड द सीन्स और उसको वो रिसर्च वीडियो में डालना सही नहीं लगा बिकॉज उसको भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम की वीडियो बनानी है. तो उसके बाद उसने मेन क्रक्स रख दिया. बट वट इट सीम्स लाइक श्वेताब ने उसकी वीडियो देखी, उस वीडियो पे रिएक्ट करके जो उसके मन में आया बोल दिया, विच इज़ नॉट रिसर्च. व्हेन वी डू अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च एंड व्हेन वी लुक फॉर न्यूआंस वी सी कि पहली बात तो वर्जिनिटी कितनी इंपॉर्टेंस होती मोस्ट ऑफ इंडिया में, बहुत ज़्यादा इंडिया में, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं ना यार. ये दिल्ली फरीदाबाद NCR एरिया में रहता हूँ मैं, तुम लोग कुछ लोग बेंगलोर में, कुछ लोग बॉम्बे में, पुणे में, ऐसी ऐसी जगहों पर रहते हो. हमारे लिए बहुत चिल है दुनिया. दैट्स नॉट मोस्ट ऑफ द इंडिया, राइट. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें हो रही हैं इंडिया में अब तक, राइट. सो पहले दैट इज़ द फर्स्ट नुआंस कि वर्जिनिटी इज़ अ बिग डील इन अ लॉट ऑफ इंडिया. सेकेंडली द नुआंस इज द बर्डन ऑफ प्रूफ. ये सारी चीज़ें जब तुम स्किप करके अगर एक वीडियो बना देते हो तो बहुत सारे लोग उस वीडियो को देखेंगे एंड दे विल बी लाइक फक. जैसे जो चीज़ें श्वेताब ने उस वीडियो में बोली हैं वो रिपीट करेंगे कि ये तो एंटी मैन है, इंडिया तो एंटी मैन होता जा रहा है, हमको कुछ करना पड़ेगा इसके लिए. उसके बाद they'll also watch videos like these, जैसे इन लॉयर की है, द लॉयर who's clearly benefiting from these videos, मतलब clearly, right. Now that doesn't mean कि वो झूठ बोल रहा है. That doesn't mean कि he's an asshole of a person. None of that. I'm not claiming any of that. Because once again मैंने 2 दिन हुए मुझे, मैंने एक वीडियो पहले देखी थी शायद आपकी, एक आज देखी है पूरी स्ट्रीम पे, है ना. So I'm not implying any negative intent on their part. बट ऐसा होता क्या, जब तुम ऐसे ऐसे कंटेंट देखते हो फिर तुम ऐसे ही कंटेंट ज़्यादा देखते हो, एल्गोरिथम तो तुम्हें वैसे ही कंटेंट और ज़्यादा दिखाती है एंड दैट बिकम्स योर इंटायर वर्ल्ड व्यू. तो ये जो ग्रेप वाला इंस्टाग्राम पोस्ट हमने देखा था,
अगर तुम ऐसे पोस्ट और फॉलो करोगे तुम्हें पता है क्या क्या दिखेगा कि भाई औरतों पे, वुमेन पे, लड़कियों पे कितना बुरा बुरा होता है इन सबके साथ. इट्स जो एल्गोरिथम्स वगैरह की दिक्कत ये है, दे बिकम अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. जो तुम चीज़ें देखते हो वो तुम्हें और ज़्यादा चीज़ें वही दिखाती रहती है और तुम्हें उसी गड्ढे में और ज़्यादा गहरा ले जाती रहती है. ब्रो चेजोस बिग फैन, आई हैव वॉच्ड मोस्ट ऑफ योर पॉपुलर वीडियोज अननोइंगली, प्लीज मेक मी योर एफिलेट. So that's the issue. All right. How do I look for your channel though? I don't even know. Image खुल गई है तो. How do I look for your channel? Just those. इतना YouTube चलाना नहीं आता मुझे. डायरेक्ट सर्च कर लूँ. अरे ये क्या लिख दिया. Is this you? Yes, this is you. You want me to have a look at your channel? Never ask this question to Magnus Carlsen. He got angry. All right. मैं copyright में डालियो. You seem to have some hiccups earlier today. You didn't have really smooth performances. And this game wasn't that smooth either. It looked a little bit unclear. What was your feeling overall as the game was transpiring? Okay, I mean, what do you want me to do? So, I mean, I take the piece, and then, I mean, of course, he hasn't done anything particularly wrong. Of course, it's not going to be lost. I mean, what do you want from me? I don't want anything. I just want to see just chess getting played. Yeah, but I mean, you're talking about, I mean, that the game wasn't smooth, and again, what do you want me to do? I mean, yeah, sure. I mean, do you want me to get a huge advantage from the opening and then to push it all the way? Is that the only way you can win a smooth game? Is that your point? Oh, not at all, Magnus. But certainly the game was tricky enough. Let me get your thoughts on how you. Yeah, but I'm just feeling that the whole, the way you're approaching it is trying to belittle the whole thing. That's my only issue. My apologies, Magnus. Most popular video. All right, man. I have observed Shwetab bragging about reading very much about a topic in the past, but I didn't feel so on multiple occasions. But obviously, I can't say that's my observation is true. Makes sense. So again, maybe he has done a lot of research in the background. But yeah, जिस तरीके से श्वेताब ने वो वीडियोस बनाई है ना, it doesn't seem like it. He's not stating specifics कि ये देखो भाई, ये वाला लॉ है, ये वाला सेक्शन है, ये चीज़ें गलत हो रही हैं. जब तुम इतनी ज़्यादा वो चीज़ें करते हो ना, you tend to do that. कि this law, this section, this, that, this. Does that make sense? Within the offer, draw a Gary Kasparov, ask Magnus what to do. Magnus replies. Oh, all right. Bhai sab, look at this lineup. Well, they have a big decision to make. It looks like a stable position where black may be in trouble. Is a knight g4 possible coming on the board? All right, that's it. No draw. Queen e4 played. And now rook. Dude, just those मैं बता रहा हूँ. If you work on your speaking skills, I don't know how your speaking skills are right now, but if you work on them, you can clearly become the Gotham Chess of India. I don't think we have Gotham Chesses जैसे channels India में, right? चलो यार, मुझे जाना पड़ेगा सुलभ शौचालय. घनी देर रह गई है. Alright guys. So yeah, I was Shwetab's biggest fan. I have even listened to Shwetab's songs on YouTube. Most don't know about his songs. I don't know about his songs, man. Shwetab YouTube से पहले क्या था? I think I know मुकुल क्या argument बना रहा है, and I like that argument usually. क्योंकि जब लोग सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में जाते हैं जब लोग सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में जाते हैं, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई तुमने अपनी लाइफ में क्या करा है. इट इज़ सीरियसली ही एडमिटेड इट वंस. अच्छा, चड्डी गैंग का मेंबर ये क्या है? विवेक विल चेक आउट हिज सॉन्ग्स. या हक के वहाँ मुँह दे. I have some video where I use my voice in this channel. Send me the link. But you get my point. जो Gotham Chess का जो है ना, and Magnus, look at what Magnus, he speaks like a commentator, like a sports commentator, proper जैसे होते हैं ना UFC में, F1 में, इन सब में. Yeah, they're good and underrated. अच्छा, there's his songs. All right.
चले मित्रों, डूड आई एम सो जा भाई, मुझे भी सोने थे। सो रहा, कल मिलते हैं यार। बट आई नीड यू गैस टू सेंड मी मोर शिट टू टॉक अबाउट ऑन लाइव। मतलब okay, I have a lot of things that I'm interested in. I can talk about those things. TB का entertain कर रखा है तो I have a lot of things I'm interested about. I'm interested in UFC. I'm interested in storytelling. मेरे पास तो पूरी एक वो भी है, not watch later, but एक playlist भी है जिसको you know about the things I would like to watch on live. But I need you guys to send me shit as well because यार this is my flaw, मेरी ये गलती, मेरी ये कमी है, ये ट्रेंडिंग चीज़ों के बारे में मुझे किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता होता। चलो, good night guys. Just Joe, sorry for the alright, fuck off guys. मैं चैट लिख के जा रहा हूँ गुड नाइट चैट पे लिख रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि वरना बाद में कई बार एंड करने के बाद लोगों का मैसेज आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। Good night guys, take care.